Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, we'll be covering computer awareness for the CBSE Direct Recruitment Examination. In this video, I'll be doing the topic MS Office. So first of all, MS Office is basically a productivity software developed by Microsoft. It is a group of computer programs made by Microsoft for office work like typing, calculations, making presentations, etc. ठीक है? Microsoft details. The headquarters is at Washington DC and it was founded in April 1975. Components of MS Office देख लेते हैं. First of all, we have MS Word, then MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook and MS Publisher. ठीक है, इसमें ट्राई टू रिमेंबर दिस फैक्ट कि MS पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट और ये सब जो होते हैं ना, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द MS ऑफिस ग्रुप. ठीक है, दे आर बेसिकली accessories which are provided and not a part of the main suite, MS Office suite. तो क्या क्या है? MS Office है which is used for editing text documents, MS Excel which is used primarily for data entry and making spreadsheets, then MS PowerPoint which is used for creating presentations, then we have MS Access for creating and managing database. ठीक है, MS Outlook for managing emails, calendars and contact details, etc. Then we have MS Publisher for designing brochures, cards and newsletters. अभी MS Word का इंटरफेस देख लेते हैं. You may have seen this many times in your computer. So we have the help button यहाँ पे, फिर Office Access Toolbar इसको बोलते हैं, जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, ये सब ऑप्शंस जिसमें पड़े होते हैं, दैट इज़ नोन एज द ऑफिस एक्सेस टूल बार. ठीक है, देन वी हैव द रिबन में ये एडिटिंग के लिए फॉर टेक्स्ट साइज, टाइप ऑफ टेक्स्ट, बोल्ड, अंडरलाइन, ये सब दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द रिबन. ठीक है, देन वी हैव द रूलर and for adjusting the dimensions, and after that we have the text area, वो white page रहता है ना, and then we also have the vertical ruler as well. इस side there is a tab selector नीचे, सबसे नीचे. Then we have a zoom tool as well as there is also a browse button present. ठीक है, then we also have certain view buttons on the ribbon which can be used for different selecting different options. Next we also have certain office tools और हेल्प बटन भी प्रेजेंट होता है, और ये सारे जो माइनस, क्रॉस और ये सब है विंडोज़ कंट्रोल्स हैं. ठीक है, ये सब रिबन टैब्स. देन वी हैव टाइटल बार हियर एज वेल. ठीक है, नेक्स्ट है की इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस. करंट वर्जन एंड डिफ़ॉल्ट क्या है? द करंट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज 2021. Default settings here: when MS Word, Excel and PowerPoint is opened, home menus open by default. ठीक है, how to open, ये ऐसे simple है. Click the start button, go to all programs, then go to MS Office and select whichever one you want to open. Primary applications and their uses. MS Word क्या है? Used to create documents. Then Microsoft Excel, it is used for making spreadsheets, calculations, etc. Microsoft PowerPoint, it is used to make presentations, and Microsoft Access is basically a database program. इंटरफेस एलिमेंट्स देख लेते हैं. वही फिर से वही दिखा रहे हैं. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बटन है, देन वी हैव द क्विक एक्सेस टूल बार, then dialog box launcher, click tab to change command shown in the ribbon, then we have the title bar, group, ribbon, etc. ठीक है, अभी पढ़ा था हमने. Then we have zoom functionality also. MS Word में minimum 10% होता है, maximum 500%, whereas MS Excel and PowerPoint में the maximum is 400%. ठीक है, और डिफ़ॉल्ट जूम कितना रहता है? 100% रहता है. जूम शॉर्टकट्स क्या है? जूम इन के लिए कंट्रोल प्लस स्क्रॉल व्हील अप, एंड
जूम आउट के लिए कंट्रोल प्लस स्क्रॉल व्हील डाउन, ठीक है। सो नेक्स्ट वी लुक एट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल एक्सटेंशंस, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फंडामेंटल्स वी हैव ऑलरेडी सीन, थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। MS वर्ड इज़ यूज फॉर creating documents. Current version 2021 का है, and default setting is that home menu opens by default. नेक्स्ट MS एक्सेल का भी करंट वर्जन 2021 का ही चल रहा है, इवन MS पावर पॉइंट का भी सेम है, ठीक है। नाउ फाइल एक्सटेंशन टाइप्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2003 का MS वर्ड का .doc डॉक था, MS एक्सेल का .xls, MS पावर पॉइंट का .ppt, MS एक्सेस का .mdb। नेक्स्ट 2007 टिल प्रेजेंट वी हैड MS वर्ड के लिए .docx, ठीक है, MS एक्सेल के लिए .xlsx एंड MS पावर पॉइंट के लिए .pptx एंड MS एक्सेस के लिए ACCDB, ठीक है। नेक्स्ट कॉमन फाइल एक्सटेंशंस बाकी के देख लेते हैं। .txt इज़ फॉर अ प्लेन टेक्स्ट फाइल, then .mp3 is for mp3 audio file, .mp4 is for mpeg video file, then .bmp will be for bitmap image file, ठीक है। .zip is for zipped file, .pdb is for program database. Next .gif is for a graphic interchange format file, ठीक है। .jpg इमेज के लिए है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट वी हैव .png, इट इज़ फॉर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, देन .pdf इज़ फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, देन .mdb इज़ फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। और फिर वैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का जो 2007 के बाद .accdb हो गया है, ठीक है। पहले .mdb था, अभी .accdb हो गया है। नेक्स्ट इंस्टॉलेशन फाइल्स के लिए क्या रहता है, .exe, ठीक है। सो वील रिवाइज दिस वंस मोर। .txt इज़ फॉर प्लेन टेक्स्ट फाइल, देन .mp3 इज़ फॉर एन mp3 ऑडियो फाइल, .mp4 इज़ फॉर mpeg वीडियो फाइल, देन .bmp इज़ फॉर bitmap image file, ठीक है। then .zip will be a zipped file, then .pdb is for a program database. Next .gif is for graphic interchange format file, then .jpg is for a jpeg image joint photographic expert group. Next .png is for portable network graphic, ठीक है। then .pdf is for portable document format, .mdb is for Microsoft Access Database. Next .exe is an installation file, ठीक है। Next title bar in MS Word, Excel, PowerPoint, etc. The topmost bar is known as a title bar, ठीक है। It shows the name of the currently working file and the extension of that file as well. To the right of the title bar are the minimize, maximize, restore and close buttons, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा, द टॉप मोस्ट बार इज नोन एज द टाइटल बार। नेक्स्ट है क्विक एक्सेस टूल बार। सो इट इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टाइटल बार, ठीक है। कस्टमाइजेबल बटन्स फॉर फ्रीक्वेंट कमांड्स आर यूजुअली प्रेजेंट हियर। तो जैसे यहाँ सेव का ऑप्शन है, अनडू रीडू का ऑप्शन है, ठीक है। It commonly contains undo, redo and save options, ठीक है। यहाँ लेफ्ट साइड ऑफ द टाइटल बार। मिनिमाइज पता ही है हमको, मूव्स एंड ओपन फाइल फोल्डर और सॉफ्टवेयर टू द बॉटम ऑफ द टास्क बार। कीबोर्ड शॉर्टकट क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कीबोर्ड शॉर्टकट्स आर वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो ऑल्ट प्लस स्पेस बटन दबाने से अपने आप मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में मैक्सिमाइज करने के लिए इट एक्सपैंड्स टू द फुल पेज और रिस्टोर्स टू अ मिनिमाइज फाइल और फोल्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्लोज के लिए क्लोजेस एंड ओपन
closes an open file, folder or software application. नेक्स्ट है टास्क बार एंड रिबन इंटरफेस. तो टास्क बार क्या रहता है? इट इज़ अ थिन रेक्टेंगुलर बार एट द बॉटम ऑफ द विंडोज डेस्कटॉप. द डिफ़ॉल्ट पोजिशन इज सेट टू द बॉटम. हाउएवर अगर आपको चाहिए तो यू कैन ड्रैग इट एंड ब्रिंग इट टू द साइड ऑल्सो. ठीक है. नेक्स्ट है लेफ्ट साइड. The start button is visible on the left side of the taskbar. Then on the right side we have the calendar, clock, networks और sound, notification etc. ठीक है. ये सब आइकन्स छोटा छोटा आइकन्स रहते हैं on the right side of the taskbar. Then in the middle we have the software, folders, files that are currently open or pinned to open quickly are visible. ठीक है. यहाँ पे मिडल ऑफ द टास्क बार यहाँ पे दिया नहीं है फोटो, बट files which are currently open or whichever files are pinned to the taskbar are present here. ठीक है. नेक्स्ट है रिबन और मेन्यू बार का लिस्ट. सो MS वर्ड में क्या क्या रहता है? फाइल रहता है, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट्स, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू. ये रहेगा. रिबन जो है ना, इसको मेन्यू बार भी बोलते हैं या रिबन बोलते हैं. दिस वन, इसमें ये सब रहेंगे, होम, फाइल, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, ऑल ऑफ दीज. ठीक है. देन MS एक्सेल में क्या क्या रहता है रिबन में? देयर इज फाइल, होम, इंसर्ट, लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प. ठीक है. तो इसमें डिफरेंट क्या है? बस इसमें फाइल, होम, इंसर्ट सेम है, लेआउट भी सेम है, फॉर्मूलाज इज डिफरेंट इन केस ऑफ MS एक्सेल. देन डेटा इज ऑल्सो डिफरेंट, रिव्यू और व्यू सेम है और हेल्प भी होता ही है MS वर्ड में भी. ठीक है. देन MS पावर पॉइंट में क्या क्या है? फाइल, होम, ड्रॉ, डिज़ाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, स्लाइड शो. ठीक है. रिकॉर्ड, रिव्यू एंड व्यू आर ऑल्सो प्रेजेंट. नेक्स्ट है फाइल और ऑफिस बटन इन MS वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट. So access common file operations like save, print, recent documents etc. ठीक है. Alt ये इसको बाद में देखते हैं. देखो जो फाइल मेन्यू है ना, उसके बारे में बताया कि उसमें क्या क्या रहते हैं. देयर कॉमन फाइल ऑपरेशंस आर प्रेजेंट इन द फाइल ऑप्शन. सच the examples of these operations are save, print, recent documents etc. देन ऑल्ट की के शॉर्टकट्स देख लेते हैं. देखो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड सीन कि ऑल्ट प्लस स्पेस दबाने से इट मिनिमाइजेज ऑल्टरनेट जोन. ठीक है. उसके बाद ऑल्ट प्लस F दबाने से फाइल मेन्यू खुल जाता है. आफ्टर दैट ऑल्ट प्लस H दबाने से वी गेट होम. ठीक है. ऑल्ट प्लस N दबाने से इंसर्ट ऑप्शन. देन आफ्टर दैट ऑल्ट प्लस JI क्या होता है? आई जस्ट सी कौन सा है ये. उससे ड्रॉ का ऑप्शन खुल जाता है. एंड देन ऑल्ट प्लस G दबाने से डिज़ाइन ऑप्शन खुल जाता है. ऑल्ट प्लस P दबाने से लेआउट का ऑप्शन खुल जाता है. देन दैट इज़ प्रिंट लेआउट, पेज लेआउट का ऑप्शन खुल जाता है. देन ऑल्ट प्लस S दबाने से रेफरेंसेस कैन बी ओपन्ड. देन ऑल्ट प्लस M इज़ फॉर मेलिंग्स एंड फॉर्मूला ऑल्सो. देखिए ऑल्ट प्लस M इज़ फॉर मेलिंग्स इन MS वर्ड, whereas alt plus M is for formula in MS Excel. ठीक है. इसमें इम्पोर्टेंट, दिस इज़ ईजी टू रिमेंबर. देखिए फाइल का F से लर्न हो जाएगा, होम के लिए H लर्न हो जाएगा, इंसर्ट का N. ठीक है. फिर JI, ड्रॉ के लिए JI यूज़ करेंगे, डिज़ाइन के लिए G. देन लेआउट के लिए ऑल्ट प्लस P, प्रिंट पेज लेआउट के लिए P से वी कैन लिंक इट टू दिस. देन रेफरेंसेस S. ठीक है. इससे लर्न हो जाएगा. नेक्स्ट क्या है? प्रेजेंटेशन, हेल्प एंड स्विचिंग शॉर्टकट्स. तो F1 से हेल्प की ओपन हो हेल्प वाला मेन्यू ओपन जो हो जाता है.
देन Alt प्लस K से ट्रांजिशंस, दिस इज़ फॉर MS पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट के शॉर्टकट्स हैं ये नीचे। Alt प्लस A से एनिमेशंस हो जाते हैं, तो दिस इज़ इजी टू रिमेंबर। Alt प्लस S से स्लाइड शो आ जाता है। Alt प्लस टैब से there is a switch in the applicant, that is you can switch between applications via Alt plus tab shortcut। ठीक है, इसमें लर्न करने वाला यही है इम्पोर्टेंट, Alt plus K since this is different, बाकी तो you will be able to remember easily। ठीक है, नेक्स्ट है फाइल ऑपरेशंस एंड क्विक एक्सेस टूल बार पे फाइल मेन्यू कमांड्स एंड शॉर्टकट्स। ठीक है, तो कौन से मेन्यू में, फाइल मेन्यू में कमांड्स होते हैं एंड देयर करस्पॉन्डिंग शॉर्टकट्स। न्यू का रहता है एक तो गेट अ न्यू पेज और अ न्यू फाइल, तो इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एन। ठीक है, ओपन के लिए क्या है, टू ओपन अ सेव्ड वर्क और अ सेव्ड फाइल, उसके लिए कंट्रोल प्लस ओ कर सकते हैं। देन इन्फो के लिए टू गेट योर फाइल इंफॉर्मेशन देयर इज एन इन्फो ऑप्शन प्रेजेंट। देन टू सेव आवर वर्क or a created file, you can use control plus S or the save option। नेक्स्ट सेव एज करने के लिए टू सेव द सेम फाइल विद अ डिफरेंट नेम और टू सेव वन फाइल इन अनदर प्लेस, यू कैन यूज सेव एज ऑप्शन और द F12 बटन। ठीक है, प्रिंट के लिए टू प्रिंट द वर्क डन यू कैन यूज द प्रिंट ऑप्शन और कंट्रोल प्लस P। नेक्स्ट प्रिंट प्रीव्यू निकालने के लिए टू सी हाउ द प्रिंट विल लुक बिफोर यू प्रिंट योर वर्क, यू कैन यूज कंट्रोल प्लस F2 और कंट्रोल प्लस Alt प्लस I। ठीक है, शेयर के लिए क्या रहेगा, टू शेयर अ फाइल, शेयर ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। और एक्सपोर्ट के लिए क्या रहेगा, टू चेंज द फाइल टाइप और टू चेंज फाइल इनटू PDF, उसके लिए हम एक्सपोर्ट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। देन क्लोज इज़ फॉर क्लोजिंग द फाइल, तो उसके लिए देयर इज़ अ शॉर्टकट की ऑल्सो कंट्रोल प्लस W। ठीक है, अभी वी लुक एट दी एडिटिंग टूल्स थोड़ा सा। देखो, क्विक एक्सेस टूल्स कौन से MS वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट में यूजुअली सेव का होता है, अनडू या रीडू। यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज दिस अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। ठीक है, अनडू इज़ टू रेक्टिफाई अ मिस्टेक और रीस्टोर दी जो पहले था वो रीस्टोर करने के लिए। देन रीडू इज़ टू रीस्टोर द वर्क डन बाय अनडू एंड कोलैप्स द रिबन इज़ टू हाइड द रिबन टैब। ठीक है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस F1 यूज़ कर सकते हैं। This is also important to collapse the ribbon। नेक्स्ट है क्लिपबोर्ड कमांड्स, तो MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में ये सब रहते हैं। सो वी हैव कट के लिए कंट्रोल प्लस X कैन बी यूज्ड, देन फॉर कॉपीइंग यू कैन यूज कंट्रोल प्लस C एंड फॉर पेस्टिंग यू कैन यूज कंट्रोल प्लस V। फॉर्मेट पेंटर के लिए यू कैन यूज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस CR और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V। ठीक है, फिर एडिटिंग एंड सिलेक्शन कमांड्स जो है MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट के, उनके लिए सो वील सी। फाइंड के लिए टू फाइंड द वर्ड यूज कंट्रोल प्लस F, टू replace a word, to search and replace a word you can use control plus H। देन गो टू के लिए टू जंप टू अ लाइन, पेज और पैराग्राफ यूज कंट्रोल प्लस G एंड फॉर सिलेक्टिंग समथिंग यू कैन यूज कंट्रोल प्लस A। फिर एप्लीकेशन स्पेसिफिक फीचर्स और मेन्यूज़ देख लेते हैं। MS वर्ड एडिटिंग ग्रुप डिफरेंसेस देखते हैं। MS वर्ड एंड पावर पॉइंट हैव फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, सो एक्सेल्स एडिटिंग ग्रुप कमांड्स हैव फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट, ऑटो, सम, फिल, क्लियर ऑप्शंस, ऑल ऑफ दीज दे हैव। और ड्रॉ मेन्यू इज़ अवेलेबल इन MS वर्ड एंड पावर पॉइंट, तो उसमें पेंसिल, ब्रश ये सब मिलता है। However, Excel does not have a draw menu. This is very important। ऐसे ही बस यही उठा के सवाल पूछ लेंगे एग्ज़ाम में कि ड्रॉ मेन्यू है कि नहीं, इस पे स्टेटमेंट चेक वेदर द स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, now we'll look at the key features and file naming in MS Excel। तो
डिफ़ॉल्ट सेव नेम क्या रहता है एमएस एक्सेल में? ये ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में। डिफ़ॉल्ट सेव नेम इज़ बुक 1 और वर्कबुक 1 इफ अनसेव्ड। देन मैक्सिमम फाइल नेम का लेंथ कितना है? 31 कैरेक्टर्स, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देन वर्जन हिस्ट्री एंड एक्सटेंशंस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्जन 1 1985 का है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्जन 12 इज़ फ्रॉम 2007। इसमें एक्सटेंशन का नेम चेंज हो गया था, पहले डॉट एक्स एल एस होता था, अभी 2007 के बाद से डॉट एक्स एल एस एक्स हो गया, ठीक है। और इन दिस द नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज हैव ऑल्सो बीन चेंज्ड वर्जन 12 में। देन एम एस एक्सेल वर्जन 14 केम इन 2010। इसमें sparkline graphics were introduced, pivot table, slicers and a 64-bit version was also introduced, ठीक है। फिर Microsoft Excel version 18 में it had come in 2021, तो वही दिया है। MS Excel 2003 का एक्सटेंशन नेम था .xls एंड बाकी के जो 2007 onwards the extension .xlsx was used, ठीक है। यहाँ पे वही दिया है कि रो ऐसा हो रहता है हॉरिजॉन्टल, column is vertical and one unit is known as a cell, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बॉक्स भी बोलते हैं इसको। the line above that stands for the menu bar. Then we also have the standard toolbar and the formatting toolbar, ठीक है। यहाँ पे एक सेल नंबर का बॉक्स रहता है, तो जो भी विच एवर सेल वी हैव सिलेक्टेड उसमें वो आ जाएगा सेल नंबर, ठीक है। एंड दीज आर द वर्कशीट टैब स्क्रॉल बटन्स एंड दीज आर द वर्कशीट टैब्स, so you can work on multiple worksheets simultaneously. These are the scroll buttons. Next है की concepts and shortcuts. So font and cell definition के लिए देख लेते हैं। By default font size in 2003 was Arial और उसका font size था 10 points. However, after 2007 the default font became Calibri and the size became 11 points. This is a very commonly asked question in KVS. KVS एग्ज़ाम जो है ना, KVS NVS, these are conducted by CBSE themselves, तो उनका पैटर्न इज ऑल्सो क्वाइट सिमिलर टू दी अपकमिंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है minimum font size. So minimum font size is generally 1 point and the maximum font size here is 409, ठीक है। MS Excel worksheet is made up of rows and columns and the division of rows and columns is called as cell, and a cell is the intersection of a row and a column, ठीक है। नेक्स्ट है शीट टैब. सो MS Excel 2003, 2007, 10, 13, they have total 3 sheets by default and you can add more if required. However, in the later versions, MS Excel 2016, 2019, 2021, there's only a single sheet tab by default, ठीक है। The number of sheets can be increased or decreased as per the requirement and their name and color can also be changed accordingly. Now the sheet is divided into rows and columns. तो ये पता ही है. Rows and columns in MS Excel 2003. So earlier there were 65,536 rows and the number of columns was 256. However, in the later versions, this was increased by a very big amount. तो number of rows कितने हो जाते थे? 10 lakh. 10,48,576, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ये वाले जो है ना, दीज कैन बी इजीली आस्क्ड, मतलब 2003 का तो नहीं पूछेंगे बट दिस वन यू शुड नो द प्रेजेंट वन। सो कॉलम्स कितने होते हैं? 16,384, वेयर एज द नंबर ऑफ रोज आर 10 लाख, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेविगेशन शॉर्टकट्स. सो इन ऑर्डर टू गो टू द फर्स्ट कॉलम यू कैन यूज कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो,
And for going to the last column, you can use control plus right arrow. For going to the first row, you can use the control plus up arrow, and for the last row, control plus down arrow. Next है cell and sheet specifications. Maximum characters per cell. This is also very important. The maximum number of characters which can be entered into a cell are 32,767. Basic building block of a worksheet is a cell. Then cell address का format देख लेते हैं. There's first of all we write the column and then we write the row. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल A is to 1 लिखा है तो A is the column number and then we have the row number. ठीक है, इसको लर्न करने के लिए ऐसे ही लर्न कर लीजिए. अल्फ़ाबेट्स में भी C comes first है ना, तो column will come first and then we will have the row. नेक्स्ट है मैक्सिमम कॉलम विड्थ. तो मैक्सिमम कॉलम विड्थ इज अराउंड 256 कैरेक्टर्स की. ठीक है, तो ये ट्राई टू रिमेंबर दिस. दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ KVS NVS. तो मैक्सिमम कैरेक्टर्स पर सेल इज 32,767. However, the maximum column width is 256 characters. ठीक है. नेक्स्ट है अलाइनमेंट एंड सिलेक्शन. टोटल देर आर 6 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स. फाइन. टाइप्स क्या क्या है? टॉप है, टॉप अलाइंड, मिडिल अलाइंड, बॉटम, लेफ्ट, सेंटर, राइट एक्सेट्रा. ठीक है. एंड सिलेक्शन टिप क्या है? प्रेस द कंट्रोल बटन टू सिलेक्ट डिफरेंट सेल्स. ठीक है. नेक्स्ट है स्टेटस बार फंक्शंस. द राइट साइड शोज टोटल एंड एवरेज ऑफ द सिलेक्टेड सेल्स, whereas राइट साइड की कंट्रोल क्या है? जूम, स्लाइडर एंड व्यू बटन. ठीक है. नेक्स्ट है मेन्यू बार. सो देर आर टोटल 9 टैब्स इन द मेन्यू बार. सो द फर्स्ट वन इज फाइल, देन वी हैव होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, formulas, data, review, view and help. Now we look at the home tab in Excel. So home tab में there's clipboard, font size, alignment का ग्रुप रहेगा, एक font का ग्रुप है, ये number का ग्रुप है ना. Then we have styles, then cells and editing. So font group में क्या क्या रहेंगे? The option of border around the cell is given inside the font command group of the Excel. This is very important since ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि ये वाला कौन से ग्रुप में आएगा, तो हमें लगेगा कि ये बॉर्डर तो नहीं आएगा फॉन्ट ग्रुप में, बट दिस इज इन द फॉन्ट ग्रुप इटसेल्फ. ठीक है. नेक्स्ट है अलाइनमेंट ग्रुप में. अलाइनमेंट के 6 ऑप्शंस हैं. देयर इज ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर इंक्रीजिंग द इंडेंटेशन और डिक्रीजिंग द इंडेंटेशन एंड दिस इज द आइकन फॉर दैट. नेक्स्ट है मर्ज एंड सेंटर. उसका भी एक ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर का, उसका आइकन ऐसा रहता है. एंड देन वी हैव एन ऑप्शन फॉर ओरिएंटेशन. ठीक है. नेक्स्ट है रैप टेक्स्ट. वो होता है ऑल्ट प्लस एंटर से. दैट इज़ वन शॉर्टकट की. व्हेन वी टाइप समथिंग इन एक्सेल एंड इट गोज आउट ऑफ अ सेल, वी यूज रैप टेक्स्ट टू सेट इट इन द स्मॉल सेल और द टेक्स्ट अपीयर्स बिलो द टेक्स्ट. ठीक है. द ऑप्शन ऑफ रैप टेक्स्ट कम्स इन द अलाइनमेंट बटन, अलाइनमेंट रिबन ऑफ द होम टैब ऑफ द मेन्यू बार. ठीक है. तो अलाइनमेंट वाला जो ग्रुप है ना, उसमें दे विल बी एन ऑप्शन फॉर रैपिंग द टेक्स्ट. नेक्स्ट is styles. Using this, the cell can be converted into a table format. For this, different designs and styles are given. तो if you want some colors in your cells, ऐसे उसके लिए you can use this style group. ठीक है. Then we have cells का group. The cells ribbon has 3 options. There's insert, delete and format. Insert के लिए you can insert either a new row or a column or a sheet can also be inserted. Fine. Then delete के लिए using this a row, column or a sheet is deleted. Next, format. Using this, the format, size, length and width of a row, column or sheet can be changed. Next we have the formula bar as well.
Whatever text or number or formula we type, it shows us in the formula bar, and we can also change or edit it from the formula bar itself. The data written in the active cell also appears in the formula bar. ठीक है? Next, we look at the name box. The name box shows the address of the cell. तो यहाँ पे रहता है, and here by entering the address of our cell, we can also directly go to that cell. So by default इसमें क्या रहता है, A1 लिखा रहता है. Next है MS Excel. Key points क्या है, the basic unit of an Excel spreadsheet where we enter data is known as a cell, and every worksheet is composed of thousands of rectangles which are called cells. A cell is the intersection of a row and a column. Worksheet क्या है? In MS Excel, a worksheet, also known as a spreadsheet, is a table into which you enter data and data label. So maximum characters in a cell a worksheet can contain is 256. ठीक है? The character can be created using the chart wizard in Excel. So F11 करके use कर सकते हैं. Next, Control A to Z shortcut keys. We'll study about the shortcut keys since these are very commonly asked in the examination. So for selection and formatting, we have these shortcut keys. So the first one is Control plus A, उससे select all हो जाता है. फिर bold करने के लिए we can use Control plus B. ठीक है? Then for copying a text, we can use Control plus C. For duplicating a text, Control plus D. Aligning the text into center, उसके लिए Control plus E. For finding something, you can use Control plus F. For go to का option के लिए you can use Control plus G, and for replacing something use Control H, and italic के लिए Control I. ठीक है? Then we have document and file related shortcut keys. So justify के लिए Control J, मतलब this is a type of alignment. ठीक है? Then hyperlink के लिए Control plus K use कर सकते हैं. Then for left align use Control L. For new slide use Control M. ठीक है? This is very important. हमें लगेगा कि कंट्रोल एन यूज़ करना है, बट नहीं. कंट्रोल एन इज़ फॉर न्यू पेज, whereas control M is for new slide. Next, for opening something you can use Control O. For printing something you can use Control plus P, and for quitting something you can use Control plus Q, and for right alignment Control R. ठीक है? Then we have navigation and editing. Control S can be used for saving the work. New tab के लिए Control T. Next, for underlining something, Control U. For pasting something, you can use Control V. For closing the window, you can use Control plus W. Then we have Control plus X for cutting. वो cut copy paste वाला. Cutting के लिए Control X. Control V is for redo, and Control Z is for undo. Next, we look at some computer abbreviations. ठीक है? So the first one which we are looking at is Advanced Audio Coding. उसको AAC बोलते हैं. ठीक है? AAC stands for Advanced Audio Coding. Then we have ABR, which stands for Average Bit Rate. Then ADSL, which stands for Asymmetric Digital Subscriber Line. Then we have AGP, which stands for Advanced Graphics Port. Then AI stands for Artificial Intelligence. Then we look at some networking abbreviations. We have ALGOL, which stands for Algorithmic Language. Then AOL stands for America Online. Then ARP stands for Address Resolution Protocol. Then we have ARPANET, ARPANET, which stands for Advanced Research Projects Agency Network. ठीक है? Then Programming and Computing के लिए Algorithmic Language के लिए you can वही same repeat हो गया, ALGOL use होता है. Then Arithmetic and ALU is used for Arithmetic and Logic Unit.
API stands for Application Program Interface. This is very important. Okay. Then APT stands for Automatically Programmed Tooling. Then we have ASCII stands for Standard Code for Information Interchange. ठीक है. Next है ASPI. It stands for Advanced SCSI Programming Interface. Next, hardware and technology के लिए AMD stands for Advanced Micro Devices. Then we have ATA, which stands for Advanced Technology Attachment. Next है Advanced Audio Coding के लिए we use AAC. Then ABR stands for Average Bit Rate. ADSL stands for Asymmetric Digital Subscriber Line. ठीक है. Then we have AGP, which stands for Advanced Graphics Port. Then AI के लिए वही Artificial Intelligence. वही repeat हो रहे हैं. I think this page has been repeated. ठीक है. So this page has been repeated. So we'll skip this. कुछ इसमें different है शायद. जैसे ये वाले these are a bit different. AIM है AOL Instant Messenger. Then we have AOL stands for America Online. ARP stands for Address Resolution Protocol. Then ARPANET stands for Advanced Research Projects Agency Network. ARQ stands for Automatic Repeat Request. ASP stands for Autonomous System. Then ATDT stands for Attention Dial Tone. ठीक है. बाकी we have done already ऊपर. Next, file and data forms. So AUI stands for Attachment User Interface. Then we have AVI, which stands for Audio Video Interleave. ठीक है. BMP stands for Bitmap. CC stands for Carbon Copy. Then BCD stands for Binary Coded Decimal. Next we have BCC again with Blind Carbon Copy. BDSL stands for Broadband DSL. ठीक है. BGP stands for Border Gateway Protocol. Then we have BHTML stands for Broadcast Hypertext Markup Language. Then CGI BIN stands for Common Gateway Interface Binary. ठीक है. Then CIS stands for CompuServe Information Service. Next we have BASIC. BASIC stands for Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code. This is a high-level language. Next है BCR. BCR stands for Barcode Reader. Then we have BEDO, which stands for Burst Extended Data Out RAM. BIOS stands for Basic Input Output System. Then BIPS stands for Billion Instructions per Second. BIU stands for Bus Interface Unit. ठीक है. BRD is Blu-ray disc. CD is compact disc. CDR is compact disc recordable. Then CD-ROM है compact disc read only memory. ठीक है. Then we have CDRW, which stands for compact disc rewritable. Next है compact disc write once. तो उसके लिए WO लिखते हैं. ठीक है. And then we have CDXA, which stands for compact disc extended architecture. Next है CISC, which stands for Complex Instruction Set Computers. अच्छा. Then we have CMD, which stands for Command. CPU is Central Processing Unit. CROM is Computerized Range of Motion.
Then we have CRT, which stands for cathode ray tube. Okay, it is basically a standard type computer monitor display. Then we have COBOL. COBOL stands for Common Business Oriented Language. This is a level language. Okay. Then we have CSS, which stands for Cascading Style Sheets. Then we have DML, Data Manipulation Language. DBMS, Database Management System. DDL, Data Definition Language. DHTML, Dynamics Hypertext Markup Language. फिर CMY के मतलब सियान मैजेंटा येलो ब्लैक, ये डिस्प्ले के लिए यूज़ करते हैं CMY के। कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी होता है एक कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। And we have CPI, clock or cycle per instruction. फिर DAC, data acquisition and control. Then DAT, digital audio tape. फिर DB stands for decibel. ठीक है। नेक्स्ट है CTRL is control, ये पता ही होगा। And CUI stands for character user interface. यहाँ पे बचा है CNM stands for circulatory network mode. Then we have COAX, that stands for coaxial cable for Ethernet and similar networks. Then CSLIP होता है, that is compressed serial line interface. ठीक है, compressed serial line interface protocol. फिर DNS है, domain name system. Next है DRAM. DRAM stands for dynamic random access memory. फिर EIDE, which stands for enhanced integrated drive electronics. Then EEPROM, electronically erasable programmable read only memory. This is very important. Then EPROM, erasable programmable read only memory. फिर है EROM, which is erasable read only memory. Then we have FDD, which stands for floppy disk drive. Then GB, gigabyte HD hard disk. फिर है स्टोरेज एंड मीडिया, तो DVD रहेगा, डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है। देन DVD-R, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल. Then we have digital versatile disk rewritable. And then DVR stands for digital video recorder. फिर DOS का होता है disk operating system. ठीक है। फिर EFS stands for encrypted file system. Then GDI stands for graphical device interface. फिर GUI stands for graphical users interface. DOC, data optimizing computer. DOC छोटा में, दिस इज कैपिटल्स में, डेटा ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर होता है, डॉक का होता है डॉक्यूमेंट। ठीक है। ई कॉमर्स इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, EDC इज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर. फिर EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. फिर EDP, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग. फिर ईमेल के लिए इलेक्ट्रॉनिक मेल. Then HTML stands for hypertext markup language. Next है DCE. DCE is data communications equipment. और फिर DVI stands for digital visuals interface. Next we have HTTP, hypertext transfer protocol. IMAP, Internet Message Access Protocol. IP, Internet Protocol. ISDN, Integrated Services Digital Network.
ISP, Internet Service Provider. LAN, Local Area Network. Then we have MAC, Media Access Control. Metropolitan Area Network. Then modem, modulator, demodulator. IO, input output. ठीक है. It has both serial and parallel ports. ठीक है. IC, integrated circuit. Intel का full form क्या है? Integrated Electronics. Next, IOP, input output processor. Then IVR, interactive voice response. नेक्स्ट है किलोबाइट के लिए केबी यूज़ करते हैं. केबीपीएस स्टैंड्स फॉर किलोबाइट्स पर सेकेंड. एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड. एलपीटी इज लाइन प्रिंटर. एमबी इज मदरबोर्ड या मेगाबाइट. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू यूज़ बी एज अ कैपिटल लेटर और अ स्मॉल लेटर. ठीक है. देन एमबीपीएस इज मेगाबाइट्स पर सेकेंड और एन का अगर स्मॉल बी यूज़ करें तो मेगाबिट्स पर सेकेंड हो जाएगा. Next, LLL stands for low level language. MBasic is Microsoft Basic. MICR is Magnetic Ink Character Recognition. MMX stands for Multimedia Extensions. MSCDEX Microsoft Compact Disk Extension. और MS DOS है Microsoft Disk Operating System. फिर NAT है Network Address Translation. NTP Network Time Protocol. P2P is point-to-point protocol. Then PAN है Personal Area Network. PPP is point-to-network protocol. Then routing information के लिए RIP यूज़ करते हैं. और SAN के लिए Storage Area Network होता है. OCR is Optical Character Reader. OMR is Optical Mark Reader. Then personal computers के लिए PC यूज़ करते हैं. PCB stands for Printer Circuit Board. Printed आएगा. ठीक है. PCI is Peripheral Component Interconnect. Then we have Pixel, which stands for Hypertext Preprocessor. PRN is Bank Management. फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए OOP यूज़ करते हैं. OS stands for ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. PHP stands for पोर्टेबल नेटवर्क बोर्ड. Then we have PROM, which stands for Programmable Read-Only Memory. Then we have RARP, which is Reverse Resolution Protocol. RDBMS, Relational Data Management System. SIP is for Session Initiation Protocol. SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol. SNAP stands for Sub Network Access Protocol. SNMP stands for Simple Network Management Protocol. ठीक है. TCP is Transmission Control Protocol. WAN stands for Wide Area Network. WAP stands for Wireless Application Protocol. Then Wi-Fi के लिए Wireless Fidelity का शॉर्ट फॉर्म है Wi-Fi. WLAN stands for Wireless Local Area Network. Then we have SFTP, Secure File Transfer Protocol. SGML stands for Standard Generalized Markup Language. Then UI stands for User Interface. URL क्या होता है? Uniform Resource Locator. ठीक है. फिर WBMP क्या रहेगा? Wireless Bitmap Page. और WML stands for Wireless Markup Language. ठीक है. फिर SDRAM होता है Synchronous Dynamic Random Access Memory. Then SGRAM is for Synchronous Graphics RAM. Serial Interface Unit के लिए SIU यूज़ करते हैं. SRAM के लिए Static Random Access Memory. USB is for Universal Serial Bus. VCD stands for Video Compact Disc. VDO is Visual Display Unit. Then we have VRAM, which is Video Random Access Memory. ठीक है. देन SYSOP के लिए सिस्टम ऑपरेटर. वायरस के लिए वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज. ठीक है. दिस मे बी आस्क्ड सिंस इट इज़ वेरी कॉमन. देन वर्चुअल एक्सटेंडेड ड्राइवर के लिए VXD यूज़ करते हैं.
Next, www stands for World Wide Web. We have SGML, which stands for Standard Generalized Markup Language. Then we have XHTML, which stands for Extendable Hypertext Markup Language. XMF stands for Extensible Music File. Then we have XML, which stands for Extensible Markup Language. ठीक है, उसके बाद Fortran is a high level language. It stands for Formula Translation. Then we have SDRAM. SDRAM stands for Synchronous Dynamic Random Access Memory. ठीक है, उसके बाद SG RAM होता है Synchronous Graphics RAM. Then we have SRAM, which stands for Static Random Access Memory. फिर VRAM होता है Video Random Access Memory. और XMS Extended Memory Specification. देन प्रोग्रामिंग एंड अदर्स के लिए सिस्टम ऑपरेटर के लिए SYSOP यूज़ करते हैं. वायरस के लिए अभी पढ़ा था वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स सीज, ये भी पढ़ा था. वर्चुअल एक्सटेंडेड ड्राइवर स्टैंड्स फॉर VXD. और XGA क्या होता है, एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे. ठीक है, ये वाले मोस्ट ऑफ देम हैव बीन रिपीटेड हियर, बट nevertheless now we'll move to the PYQs. Now the PYQs, I'll be taking up the PYQs of KVS as well as NVS examinations, which are also conducted by the CBSE itself, and they have a very similar pattern as of the CBSE direct recruitment examination. Okay, so the first question here is Ina Khande is creating her project report as a document and is interested in typing the same in easy to use software with the facility of formatting, page setting, and styling features. Which of the following will be ideal for the same? So this is a very simple question. The answer is MS Word. ठीक है, formatting वगैरह भी करनी है उनको, तो MS Word would be the best. MS Word provides comprehensive features such as formatting, page setup, styles, fonts, making it ideal for reports. Next, which of the following is a collaboration and communication platform developed by Microsoft, primarily aimed at facilitating working groups in organization? So the answer for this is Microsoft Teams. ठीक है, it is designed to support teamwork through integrated communication services like chat and video, etc. Next, which of the following is not a valid file system of Windows operating system? So the options are WQFS, XFAT, NTFS, or FAT. So the answer for this is WQFS. WQFS is not a valid Windows file system. The other represent the evolution of storage management. ठीक है, तो बाकी कौन से हैं? 1977 में file allocation table had come into being. Then 1993 में we had the new technology file system. ठीक है, and the last one was XFAT, which is Extended File Allocation Table, which came into being in 2006. ठीक है, so these are all examples of file systems of Windows. क्या क्या है? FAT, XFAT और NTFS, New Technology File System. Next question. यहाँ पे दिया है कि कौन से एग्जाम में पूछा था. ठीक है, पीछे भी. Next है, which of the following statements is wrong? GUI, Graphical User Interface, provides interaction with computer using graphical elements like buttons, menus, cursor, etc. हमें wrong statement बताना है, so this is the correct statement. ठीक है, next है operating systems are generally preloaded on computers. This is also correct. ठीक है, once you bring a new computer to your home, the operating system is already present on it. Then the CPU controls the operating system. This is wrong. ठीक है, उल्टा होता है. Modern operating systems use graphical user interface. This is correct. ठीक है, तो इसमें ऐसे रहता है, the user gives the commands to the operating system. Operating system in turn controls the hardware or the CPU. ठीक है, the operating system controls the CPU and hardware resources, not the other way around. ठीक है. Next, VGA. So VGA stands for which of the following? So the answer for this is Video Graphics Array.
the C option. So a video display controller, a video display controller standard introduced by IBM to convert digital signals into visual outputs. ठीक है, so video graphics array is basically a video display controller, standard introduced by the IBM to convert digital signals into visual output. ऐसा दिखता है. Next we have, in shortcut folder the arrow icon is always present at which corner? So the answer for this is lower left corner. ठीक है, B option है. The visual cue differentiates a shortcut from the actual file or application. ठीक है, shortcut folder में there will be a small arrow icon which will be present at the lower left corner. Next है, to rename a folder, which of the following options can be used? So the first one is click the folder, wait for a second and then click again to rename. So this is wrong, incorrect. ठीक है, सबसे पहले नहीं, डबल क्लिक, स्लो डबल क्लिक, अच्छा हाँ ठीक है, इससे हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज करेक्ट. देन सेकेंड ऑप्शन क्या है, राइट क्लिक द फोल्डर एंड सेलेक्ट रीनेम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट है प्रेस विंडोज की प्लस ई, दिस इज रॉन्ग. इससे क्या, फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा. ठीक है, यू वोंट बी एबल टू रीनेम द फोल्डर. So the answer for this will be 1 and 2 only, B. ठीक है. Next है, which of the following is the commonly used keyboard shortcut for the copy operation in MS Windows? तो copy के लिए Control C यूज़ करते हैं. ठीक है, it is the universal standard for copying selected items, Control plus C. Next, which of the following is the commonly used keyboard shortcut for the paste operation in MS Windows? So the answer for this is Control V. ठीक है, Control X is used for cutting, Control Z is undo, Control P is print and Control V is the paste operation. ठीक है. Next है, in MS Windows operating system, what action is performed using the Control plus Y keyboard shortcut? So Control plus Y is used for redo. ठीक है, so this is the answer, it redoes the action. तो undo करने के बाद if you want to reverse it again then you can do redo using Control plus Y, and undo के लिए क्या होता है, Control plus Z. Next, which of the following is the most commonly used keyboard shortcut for cut operation in MS Windows? So the answer for this is Control X. ठीक है. Next है, what is the function of the view tab in Windows? तो view tab को क्यों यूज़ करते हैं? In order to, it allows users to change how files and folders are displayed. ठीक है, so to change the display of the contents layout, this will be the correct option. So the view tab allows users to change how the files and folders are displayed, such as toggling between icons, details, lists and layout options, etc. ठीक है. Next, what is the keyboard shortcut to select all files and subfolders in a main folder? So the answer for this is Control plus A, that is Control All. Control plus A is the global shortcut to select all items within the active window. Next, which of the following is or are the characteristics of Windows 10 operating system? So the options are real-time, batch processing, multitasking और multi-programming. Windows 10 का पूछा है, so the answer for this is it is not real-time. ठीक है, real-time उसमें is no Windows 10 में नहीं है. It is multitasking है, batch processing भी नहीं है, multitasking and multi-programming है. ठीक है, तो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन रहेगा. Windows 10 is designed for personal computing.
ठीक है, and supporting multitasking and multi-programming. It is not a real-time or batch processing operating system. Next question, which of the following statements is wrong? A deleted file can never be restored from recycle bin. तो ये गलत है. ठीक है, wrong पूछा है ना हमें, so this is wrong. Next, deleting a folder deletes all its files, so this is correct. A deleted file always goes to the recycle bin, this is also correct. Shift plus delete permanently deletes a file, so this is also correct. ठीक है, so the answer for this will be the first option. Next, Mehraj used a magic shortcut key combination that permanently deleted a file without storing it in the recycle bin. So identify the shortcut key. So the answer for this is shift plus delete. ठीक है, we just read about this अभी. Normal delete से recycle bin में चले जाता है, but shift plus delete से it is permanently deleted. Next, computer keyboard shortcut control plus K is used to do what? So the options are close the current active program, open the start menu, insert hyperlink for selected text and open a new program. So the answer for this is inserting a hyperlink. ठीक है, so hyperlink क्या होता है? Once you click on a hyperlink, आपने देखा होगा कहीं बहुत सारा टेक्स्ट दिया उसमें कुछ ब्लू कलर का लिखा रहेगा, ठीक है, एंड वंस यू क्लिक ऑन दैट यू विल गेट गो टू अ न्यू फाइल और फोल्डर. ठीक है, नेक्स्ट है insert hyperlink. Control K is the standard shortcut in MS Office applications to open the insert hyperlink dialog box. ठीक है, next है I am a shortcut key which is most useful while converting any selected text to bold while using Microsoft Office. Who am I? So the answer for this is Control plus B. ठीक है, bold के लिए shortcut key पूछ रहे हैं ये लोग. Control plus B is the answer for this. Control plus B is the toggle shortcut used to apply or remove bold formatting to selected text in Microsoft Office. Next है what happens when you press Control plus Z in the Microsoft Office applications. So the answer for this is undo. Undo का shortcut combination है ये. Control plus Z triggers the undo command, reversing the most recent action or edit made by the user. Next है MS Office does not contain the following as its integral part. So which one of the following? So the answer for this is MS Paint. MS Paint is an accessory. ठीक है, it is not a part of the main integral part of MS Office. ठीक है, so MS Paint is a basic graphics utility included with the Windows operating system. It is not a core component of the MS Office suite, which includes Excel, PowerPoint, Access, Word, etc. ठीक है, next, which of the following softwares is the most suitable for creating and printing a multi-page question paper with different fonts, sizes, diagrams and tables? So the answer for this will be MS Word. ठीक है, कोई भी document, multi-page document which requires various font sizes etc. that can be created via MS Word. MS Word is a word processing software ideal for creating formatted documents with text, images, tables and multiple pages. Next, which of the following options will help us to get the previous version of editing in Office tools? So the answer for this will be previous version जाने के लिए undo करना पड़ता है ना. So undo के लिए और shortcut option क्या होता है? Control plus Z. ठीक है, और redo के लिए क्या होता है? Control plus Y. ठीक है, तो ये यहाँ लिखा है. और फाइंड और रिप्लेस के लिए कंट्रोल H यूज़ कर सकते हैं. In MS Word, the shortcut key Control plus Z is used to undo the previously performed action. Next, which tool out of the following does not allow us to have different settings for text color, text size or text style? So the answer for this will be MS Word. ठीक है, C रहेगा ऑप्शन. नहीं, which does not allow पूछा है ना. अच्छा, does not allow में आएगा नोटपैड. ठीक है, नोटपैड में there are no such options which allow us to have text color, text size, text style. उसमें बिल्कुल ही सेम एक ही टेक्स्ट का टाइप रहता है, उसी के थ्रू एवरीथिंग इज डन. ठीक है, प्लेन टेक्स्ट रहता है नोटपैड में, whereas MS Word has a lot of rich formatting.
Notepad is a simple text editor that supports only plain text formatting. It does not provide options for changing the font color, size, or style. Next, in MS Word 2010, paragraph formatting is used for which of the following? So the options are aligning, spacing, indenting, or adding borders. So the answer for this will be all of these. ठीक है? Paragraph formatting से हमें सब we can do all of these. We can align the text, space it properly, and indentation भी डाल सकते हैं और borders can also be added. ठीक है? Sorry. So the answer will be A, all of these. ठीक है? So paragraph formatting includes alignment, line spacing, indentation, bullets, numbering, and adding borders as well. These features affect the entire paragraph. ठीक है? Next है Dash was the first commercially successful word processing software. So the answer for this is वही MS नहीं फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल पूछा है तो इसका आंसर रहता है वर्ड स्टार. ठीक है 1979 में आया था ये. WordStar was the first commercially successful word processing software. It was released in 1979 by Micropro International (INC). ठीक है. Next, which of the following shortcuts of the keyboard will help us to select the entire text in the document? So the answer for this is Control All. It's Control plus A. So Control plus A selects all the text in the document. Control C is used for copying text. Control V is for pasting, and Control X is for cut. ठीक है. Next है which of the following combination of keys of keyboards will be used to paste the copied content in a document at the point of the cursor? So this is very simple. The answer is Control plus V. Control plus V is used to paste copied content. Control P is used for printing, C copy, and Control S is for save. So the next question is which of the following key combinations is used to move the cursor to the beginning of the previous word? So the answer for this will be Control plus left arrow. ठीक है. तो इसमें क्या होता है Control plus left arrow moves the cursor to the beginning of the previous word, skipping the whole word unlike the left arrow alone which moves one character only. ठीक है. अगर आप लेफ्ट एरो करेंगे यहाँ पे कर्सर है ना तो वो कर्सर फिर यहाँ आ जाएगा. However, if you click on Control plus left arrow, then you will reach the first letter of the previous word. Next, in MS Word, which keyboard shortcut is used to open the font dialog box? तो font dialog box को open करने के लिए there is a shortcut Control plus Shift plus F. ठीक है. Control plus Shift plus F opens the font dialog box. Control plus F is used for finding stuff, and Alt plus F will open the file menu. Next है if the value of a tab is set to 5, how many times do we need to press the tab key to indent a line 15 spaces from the left side? ठीक है. तो टैब का वैल्यू क्या है 5 है एंड हाउ मेनी टाइम्स डू वी नीड टू प्रेस. तो 15 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा 3. So we'll have to press it 3 times in order to indent a line 15 spaces from the left side. So each tab equals 5 spaces. To reach 15 spaces, the calculation is 15 divided by 5, that is 3. Therefore, the tab key must be pressed thrice. I am a shortcut key which is used to undo your last action while working on MS Word. Who am I? So the answer for this is Control plus Z. Control plus Z undoes the last performed action, and Control plus Y is used to redo the undone action. Next, which of the following shortcuts will help you to insert a hyperlink in an MS Word document? So the answer for this is Control plus K. ठीक है. So Control plus K is used to insert a hyperlink. Next, which of the following keyboard shortcuts will help you align text in the middle in MS Word? So the answer for this is Control plus E. ठीक है. Control plus E is used to center align the text in MS Word.
Next, which of the following is the correct pair of keys used to make the selected text bold in a word processing software? So the answer for this is Control plus B. Okay, it is used to apply bold formatting to selected text. Next, which of the following combination of keys is used to copy a selected text into a word processor? So the answer for this is Control plus C. ठीक है, Control plus C copies the selected text into a word processor, जो भी है ना. Next, which of the following is the correct pair of keys used to paste a copied text in a word processing software? So the answer is Control plus V. Next, dash is used to quickly apply the same formatting such as color, font style and border style to multiple pieces of text or graphics. So for the answer for this will be Format Painter. ठीक है, B. Format Painter copies the formatting from one part of the document and applies it to the another, ensuring uniform formatting. ठीक है. Next, which of the following is not a possible setting available in the page margin option of MS Word? So the option is center. Center margin होता ही नहीं है कुछ, है ना. ठीक है, तो bottom margin, right margin, top margin will be there. There won't be any center margin. ठीक है. MS Word page margins include top, bottom, left and right. Center is an alignment setting and not a margin setting. Identify the default file extension of a Word document of MS Word from the options given below. So the answer for this will be docx. ठीक है, और 2000 से पहले क्या होता था, डॉट डॉक होता था. The default file extension of MS Word documents is docx, used since Word 2007. The earlier versions used to use .doc. Which of the following is a well-known example of open source word processing software? So, open source word processing software का example है LibreOffice Writer. It is an open source word processing software that works on multiple operating systems. ठीक है. MS Word के लिए you require a license since it is a proprietary software. ठीक है. Next है ये वो we'll just revise them once. Control Z is undo, Control Y redo, Control K insert hyperlink, Control E center aligned text, Control plus B is bold formatting, Control C is copy text, Control V paste text. Format Painter is used to copy the formatting style. Margins कौन से होते हैं, top, bottom, left, right. There is no center margin. .docx is for default extension. And LibreOffice is an open source alternative for MS Word. ठीक है, word processor है वो. In MS Word, what action is performed using the Control plus A keyboard shortcut? So the answer is it selects all the text in the window. ठीक है. Which of the following softwares would you use to open a document with ये docx extension? तो इसका आंसर है MS Word. ठीक है, ये ऐसे कुछ भी. .docx is for MS Word. Next, in MS Word, what action is performed using Control plus U keyboard shortcut? So the answer for this is underline. Okay, it underlines the selected text. Control plus U is used to apply underline formatting in the selected text. Control plus B is used for bold. Control I is used for italics. Okay. Next है, which software is best suited for creating, editing and displaying a presentation on the topic of netiquette using colored text, image animations and videos with sound? So the answer will be MS PowerPoint. MS PowerPoint is used to create presentations that include formatted text, images, animations, videos, audio, etc., making it ideal for presentations on topics like netiquette. Next है, which out of the following is not a possible setting available in the page margin option in MS Word? ठीक है, तो पेज मार्जिन में मिडिल मार्जिन कुछ नहीं होता है, बॉटम, राइट, टॉप एंड इवन लेफ्ट भी होता है.
ठीक है, दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कीज यूज्ड टू सिलेक्ट द इंटायर कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। तो वही कंट्रोल ए है। ये रेप्यूटेडली बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम्स में। ठीक है, कंट्रोल ए पे। और फिर न्यू डॉक्यूमेंट के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल एन। और क्लोज डॉक्यूमेंट करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एम एस वर्ड। तो वही डॉक एक्स। नेक्स्ट है इन एम एस ऑफिस इन द फॉर्मेटिंग टूल बार द फॉन्ट साइज टूल हैज डैश एज द स्मॉलेस्ट एंड डैश एज द largest size available. So the answer for this is 8 and 72. ठीक है, in MS Office the font size drop down provides font sizes starting from 8 which is the smallest and 72 which is the largest. In MS Word the thesaurus tool is used for which purpose? So the answer for this is finding synonyms and antonyms. ठीक है, this is the thesaurus tool in MS Word helps users find synonyms and antonyms of selected words. Next, in a document, which option is used to move data from one place to the other? So the answer will be cut paste. ठीक है, so to move data from one place to another, the data is first cut and then pasted at the desired location. Next है which of the following is not related to the clipboard group under the home tab in MS Word 2016. क्लिपबोर्ड ग्रुप में कौन सा नहीं आता है, नॉट इंक्लूड, नॉट रिलेटेड। सो द आंसर फॉर दिस विल बी फॉन्ट साइज। ठीक है, क्लिपबोर्ड ग्रुप में क्या क्या आता है, देयर इज फॉर्मेट पेंटर, कट कॉपी पेस्ट है, फॉन्ट साइज इज अ पार्ट ऑफ द फॉन्ट ग्रुप। नेक्स्ट है जॉन सेंड्स इन्विटेशंस टू ऑल हिज फ्रेंड्स विच एमएस वर्ड फीचर कैन ही यूज टू prepare invitation letters. So the answer will be mail merge. Mail merge का option है ना, that is used for preparing emails etc. ये वाले क्वेश्चन में ना लर्न करने के लिए आप ऐसे कर लीजिए। क्लिपबोर्ड ग्रुप क्यों है इसका नाम, बिकॉज इन सब में ना सम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज बीइंग स्टोर्ड ऑन द क्लिपबोर्ड। ठीक है, क्लिपबोर्ड पे स्टोर होता है, उसके बाद वील अगेन यूज इट समवेयर एल्स। तो कैसे हो रहा है, जैसे कट में क्या होगा, कुछ भी इंफॉर्मेशन लिखी आपने, वो कट करने पे दिस इंफॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड ऑन द कीबोर्ड एंड वंस यू पेस्ट इट समवेयर एल्स, यही वाली इंफॉर्मेशन इज टेकन अप फ्रॉम द कीबोर्ड एंड पेस्टेड समवेयर एल्स। ठीक है, सिमिलरली कॉपी में भी दिस इंफॉर्मेशन विल बी टेकन टू द क्लिपबोर्ड और उसके बाद आगे पेस्ट हो जाएगा। देन वी हैव पेस्ट में भी वही हो रहा है कि जो पहले से क्लिपबोर्ड पे पड़ा है उसी को हम लगा रहे हैं। फॉर्मेट पेंटर में भी क्या होगा, फॉर्मेट पेंटर में हमने कुछ एक फॉर्मेट का जैसे लिखा है एप्पल। ठीक है, इस फॉर्मेट को वो लोग क्लिपबोर्ड पे ले जाएंगे। ठीक है, जो भी उन्होंने हमने फॉन्ट साइज रखा है या फॉन्ट स्टाइल रखा है, दैट इंफॉर्मेशन विल बी टेकन टू द क्लिपबोर्ड and this information will then be taken to the next thing which is clipboard पे चले गया, clipboard के बाद में can be applied to some other text as well। ठीक है, next we'll move to the next question। इसमें वही आ गया ना क्लिपबोर्ड ग्रुप का, इसलिए आपको पता चल गया कौन सा यूज़ करना है। फॉन्ट ग्रुप में नॉर्मल एज द नेम सजेस्ट फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल ये सब रहेगा। नेक्स्ट है John wants to write his PhD thesis, which includes text, images, and tables. Which of the following software is most suitable for the task? So, this is very simple. The answer will be MS Word. ठीक है, next है the margins option is available under which of the following tabs of the ribbon menu in MS Word 2019? तो मार्जिन ऑप्शन कौन से में रहता है, इट इज़ अवेलेबल इन द पेज लेआउट, जो लेआउट वाला होता है ना ऑप्शन, उसके अंडर होता है ये। तो इसमें देर इज़ लेआउट में मार्जिन रहते हैं, ओरिएंटेशन रहता है, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, एंड वी ऑल्सो हैव द साइज और कॉलम्स या ब्रेक्स, पेज ब्रेक का भी ऑप्शन रहता है। इट इज़ ऑल अवेलेबल
under the layout ribbon. Next, which of the following keyboard shortcuts is used to split the document window in MS Word 2019? So the answer for this is Control plus Alt plus S. ठीक है, स्प्लिट स्क्रीन करने के लिए, स्प्लिट द डॉक्यूमेंट विंडो उसको करने के लिए यू कैन यूज कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एस. Which of the following options best describes page margins in MS Word 2010? Um, there's some misprint in this question. ठीक है, तो margins क्या होते हैं वैसे? They are the blank areas around four sides of a page. ठीक है, that is what a margin is. This is the definition of a margin. However, पूरा क्वेश्चन इसमें अच्छे से नहीं दिया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट है which of the following statements best describes the difference between paper size and page margins in MS Word 2010? So the difference between paper size and page margin, इसमें भी पूरे options नहीं दिए हैं but nevertheless paper size is the size of the paper used to print a document, while the page margins are the blank spaces at the edges of a page. ठीक है. Next question. The sample document is designed using a two-column format. Which of the following menu tabs in MS Word 2016 contains this feature? तो टू कॉलम फॉर्मेट या कॉलम्स का फॉर्मेट है ना, दैट कैन बी इंक्लूडेड फ्रॉम द लेआउट ऑप्शन. लेआउट रिबन रहता है ना मेन्यू बार में, उससे यू कैन bring columns. You can divide the whole page into columns. Next, the first sentence of the third paragraph is underlined with double line. Which keyboard shortcut in MS Word 2016 can be used to underline text with double lines? तो डबल अंडरलाइन करने के लिए जो कीबोर्ड शॉर्टकट है ना वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी. Or if you want a single underline, then you can do control plus U. But if you want a double underline, then you will have to use control plus shift plus D. और control plus D से क्या होता है? A new dialog box opens. It opens the new तो नहीं, font dialog box होता है ना, वो open हो जाता है. ठीक है, तो try to remember this. For double underline we have control plus shift plus D. Next, the first paragraph of the given sample document contains a drop cap. Which menu tab in MS Word contains this feature? So the answer is ये drop cap बोलते हैं. कोई एक लेटर को बहुत बड़ा लिखा होता है ना, you might have seen this in newspaper editorials. ठीक है, उनमें भी the first letter is usually written quite big. So this option is present in the insert tab. ठीक है, so A will be the answer. So this is a recap of what we have studied. Ribbon tabs में क्या रहता है? Layout tab में we have the option for margins and columns, and insert tab में we have the option for drop cap. Home tab में we have clipboard जिसमें cut, copy, paste as well as format painter भी इसी में रहता है. ठीक है, और उसके बाद में split window करने के लिए दी shortcut key is Control plus Alt plus S. And for double underline we have control plus shift plus D. ठीक है, next है how many first line indentations have been used in the given sample document? फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन कहाँ पे किया है? इसमें बस एक जगह पे किया दिख रहा है ना. इंडेंटेशन मतलब शुरू से थोड़ा सा दे लीव सम स्पेस यहाँ पे, दैट इज नोन एज इंडेंटेशन. ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं किया है, इधर भी नहीं किया है. So this is the only one. So there is only one first line indentation that has been used in the given document. Next, how many paragraphs in the given sample document contains the first line indentation? तो इसमें भी यहाँ पे नहीं किया है, यहाँ पे भी नहीं है, only एक ही में करा है. ठीक है, so the answer will be 1. The first paragraph in the sample document has double line spacing.
What is the keyboard shortcut to create double line spacing in an MS Word document? So this is very important. For double line spacing, you use the keyboard shortcut Ctrl+2. ठीक है. और सिंगल लाइन स्पेसिंग अगर करनी है तो Ctrl+1 यूज करते हैं. ठीक है. So the answer for this will be Ctrl+2. Next है the font of national signs in the last paragraph of the given sample document is larger than the other words. What is the keyboard shortcut to increase the font size of a selected piece of text in an MS Word document? तो बस क्वेश्चन यही है वो ये दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ अ सिलेक्टेड पीस ऑफ टेक्स्ट क्या होता है? Ctrl+स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है. तो स्क्वायर ब्रैकेट का भी जो बंद करने वाला है ना, इट इंक्रीजेज द फॉन्ट साइज ऑफ अ सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड ये वाला है इट डिक्रीजेज द फॉन्ट साइज. ठीक है. तो इसको लर्न करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे? Ctrl+ये वाला ब्रैकेट इट लुक्स लाइक ग्रेटर दैन का सिंबल है ना. तो हमें अगर ग्रेटर दैन करना है देन वी विल बी यूजिंग दिस क्लोज्ड वाला ब्रैकेट. एंड इफ वी वांट छोटा करना है अगर देन वील बी यूजिंग बाहर के साइड के लिए मतलब दिस ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट यूज करेंगे बिकॉज इट लुक्स लाइक स्मॉलर दैन. ठीक है. नेक्स्ट है हाउ मेनी पैराग्राफ्स इन द गिवन सैम्पल डॉक्यूमेंट कंटेन हैंगिंग इंडेंटेशन. तो ये जैसे दिया हुआ है इसमें हाउ मेनी पैराग्राफ्स बोला है ना, तो 1 पैराग्राफ ही है इसमें. ढंग से द sample documents have not been printed in this question, but this is how it looks basically. Hanging indentation looks like this. ठीक है. So only 1 paragraph in the sample document contains hanging indentation. According to the given passage, what are landscape and portrait? अच्छा ठीक है. तो ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है. आई हैव नॉट written the passage down here, but you can answer it without the passage also. ये comprehension types questions होते हैं ना, वैसा कुछ है, but you can do so without the passage as well. According to the passage, what are landscape and portrait? They are basically page orientation options. ठीक है. लैंडस्केप में ऐसे रहता है पेज ये वाला एंड पोर्ट्रेट में ऐसे हो जाता है. It determines how a page is displayed or printed. There are basically 2 standard types. In MS Word 2010, under which tab of the ribbon menu are the zoom in and zoom out options available? So the zoom in and zoom out options are available in the view tab of the ribbon menu. ठीक है. The zoom controls allow you to look closer at your text and these options are always found under the view tab. Next is Sonika wants to create a newsletter for her photography club. Which of the following softwares under Microsoft Office package is best suited for this purpose? तो न्यूज़लेटर बनाना है फोटोग्राफी क्लब के लिए, सो MS Word will be the best option here. ठीक है. Because MS Word is a word processing application that supports typing, editing, formatting and printing etc. It is best suited for layouts like newsletters. Next है which of the following office tools will you suggest to teachers for making their question papers and assignments? So I would suggest वही MS Word ही रहेगा for making question papers and assignments. It is the standard for preparing question papers, assignments, letters due to its robust template, formatting and table tools. Next है Deena Lal is working on his project report as a document and is interested in typing the same in an easy to use software with formatting, page settings and styling features. Which of the following will be ideal for this? So the answer is again MS Word. ठीक है. MS Word provides the necessary page setup and styling features. Google Docs is also similar, but MS Word is the correct answer among these options.
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट क्लाउड स्टोरेज डायरेक्टली। क्लाउड स्टोरेज के लिए देखो गूगल एप्स, all of the Google apps have cloud storage. Canva is also cloud storage based platform, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. Dropbox also has a cloud storage, ठीक है. It is only MS Paint which does not have cloud storage. MS Paint is an offline application and does not directly support cloud storage. In contrast, Google Apps, Canva, and Dropbox are designed with native cloud based storage integration. Next, which of the following is the default image file format of MS Paint? तो MS Paint के लिए .png भी यूज़ करते हैं. The default image file format for modern versions of MS Paint is .png. PNG stands for Portable Network Graphics. ठीक है, the format is preferred because it supports lossless image compression. ठीक है, तो क्या इसका नाम रहेगा Portable Networks Graphics .png. Now to apply the same formatting such as color, font style and size to multiple pieces of text or graphics in MS Word, you can use which of the following options? So the answer is Format Painter. ठीक है, हमने पढ़ा था कि Format Painter is present in the clipboard वाला रिबन. ठीक है, clipboard का जो ग्रुप है उसमें प्रेजेंट होता है Format Painter. ठीक है, and it is present along cut copy paste. ठीक है. Next, Format Painter is used to copy formatting like font style, size, color from one place and apply it to another. Which of the following is the default body font in Microsoft Word 2007? So the answer for this is Calibri. ठीक है, तो default font style is Calibri in MS Word 2007. और in MS Word 2007, Calibri had replaced Times New Roman as the default body font with a default size of 11. ठीक है. Next, what is gutter margin in MS Word? So, gutter margin is basically the space left for binding. ठीक है, तो दोनों पेजेस के बीच में there is some space left for binding, spiral binding वगैरह करने के लिए gutter margin is set. Bold and italic formatting are examples of what? So the answer is text style. ठीक है, bold and italic are text styles used to change the appearance of the text. Next है, which of the following is not an option under change case menu in MS Word? तो change case के अंदर क्या क्या option? It is not an option पूछा है. तो टाइटल केस नहीं होता है चेंज केस में. बाकी कौन से होते हैं? देयर इज सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड रहता है और टॉगल केस भी रहता है. देयर इज नो थिंग नोन एज टाइटल केस. MS Word provides 5 change case options. There is sentence case, lower case, upper case, capitalize each word and toggle case. ठीक है, तो सेंटेंस के लिए रहता है देयर इज लोअर केस, then upper case, then capitalizing each word and toggle case. Next, which of the following is used to replace a character string in MS Word? तो replace करने के लिए Ctrl+H यूज़ करते हैं. ठीक है, Ctrl+H opens the find and replace dialog box in MS Word. Next, which of the following is the correct pair of keys used to paste a copied text in a word processing software? So the answer for this is Ctrl+V. This is very simple. Okay, it is used to paste the copied content. Which of the following is not a type of page margin in MS Word? So we फिर से थर्ड टाइम शायद पूछा है ये सवाल. वही बॉटम मार्जिन होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, टॉप भी होता है. ठीक है, however there is no center margin which is present.
ठीक है, MS Word पेज margins include top, bottom, left and right. Center is not a margin type, it is a text alignment. ठीक है. So so the next question is, in the context of word processing softwares, the process of combining static information in a publication together with variable information in a data source to create one merged publication is called as mail merge. ठीक है, इसका आंसर है मेल मर्ज. मेल मर्ज combines the main document with the data source to produce personalized documents such as letters and labels. ठीक है. नेक्स्ट है, the keyboard shortcut to open a new Word document is which of the following? So the answer for this is Control plus N. So Control plus N is used to create or open a new Word document. Next, which of the following statements is incorrect? पूछा है, ठीक है. Extension of a Word document is generally .doc or .docs. So this is correct. MS Word is an application software. This is also correct. Press Ctrl plus A selects all contents of a Word document. This is correct. A text cannot be both italic and bold in a Word document. So this is wrong. दोनों हो सकता है. Bold और italic दोनों लगा सकते हैं. In fact, we can also put underline as well simultaneously. ठीक है. So this option is wrong. Next, which of the following word feature allows you to search for specific words inside the document and replace them with other words? So the answer for this is find and replace option. ठीक है. Find and replace is used to locate specific words and replace them with other words throughout the document. Next है, keyboard shortcut to create a line break in a Word document is which of the following? So the answer for this is लाइन ब्रेक करने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर यूज करते हैं. ठीक है. इट इंसर्ट्स अ लाइन ब्रेक विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ. सो ट्राई टू रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. शिफ्ट प्लस एंटर अगर हम दबाएंगे देन वील गेट अ लाइन ब्रेक. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू MS Word. फॉन्ट साइज कैन नॉट बी लेस दैन 1. हमें इनकरेक्ट बताना है तो दिस इज करेक्ट. Largest font size available in font size drop down list is 72. This is also correct. The smallest font size available in the drop down list is 10. नहीं, it is 8. ठीक है. Then क्या है? Keyboard shortcuts can be used to increase or decrease the font size. This is also correct. So the answer for this question is C. The smallest font size available is 8, not 10. Which of the following page orientations is the width of the page larger than its height? तो width larger than height किस में होती है? लैंडस्केप में. ठीक है, पता रहेगा, है ना. So the answer for this will be landscape. Next, which of the following is not a valid spacing option in MS Word? Not a valid line spacing option. तो देखो लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस कौन से होते हैं? They include single 1.5 lines, double, at least, exactly and multiple. ठीक है, ये सारे होते हैं the line spacing options. Therefore at most is not a valid by line spacing option. We'll just revise once more. First of all, we have single line spacing, then we have 1.5 lines का, then double line spacing, then we have at least, then exactly and multiple. ठीक है, एट मोस्ट कहीं नहीं है, एटलीस्ट है, एग्जैक्टली भी है और मल्टीपल भी है. एंड देन वी आर सिंगल 1.5 डबल. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग is the correct file extension of Excel file? So the answer is .xlsx. ठीक है. The Microsoft Excel, for Microsoft Excel 2007 and later versions, .xlsx is the default file extension. It is an XML based file format which provides better data recovery and compression compared to the older .xls format. The extension in Excel, XCL, Excel and EXCL are not valid Excel file extensions. Next, what will be the result of the following Microsoft Excel formula?
when applied to the given worksheet. तो फॉर्मूला क्या दिया हुआ है इन्होंने, एवरेज ऑफ ये B1 B2 B3 B4 B5। ठीक है, तो इसमें जो एड्रेस दिया है लाइन एड्रेस, उसमें बी स्टैंड्स फॉर द कॉलम। ठीक है, वेराज उसके बाद में जो नंबर्स लिखे हैं दो स्टैंड फॉर द रोज। ठीक है, तो बेसिकली एक पूरे कॉलम का फ्रॉम 1 2 3 4 5 इन सब का एवरेज निकालने को बोला गया है इस फॉर्मूला में। ठीक है, और अच्छा वी हैव बीन गिवन द वैल्यूज आल्सो, वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज। तो वही नॉर्मल जो मैथ्स में एवरेज का फॉर्मूला होता है 90 + 85 + 80 + 75 + 70 अपॉन कितने हैं 5। ठीक है, सो द आंसर फॉर दिस विल बी 80। 400/5 80 रहेगा। So the next question is, which one of the following symbols is used to start a formula in Excel? तो इसका आंसर है इज इक्वल टू सिंबल इज यूज्ड टू स्टार्ट अ फॉर्मूला इन एक्सेल। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एवरी फॉर्मूला always begins with the equal sign. It tells Excel that the entered content is a formula and not plain text. ठीक है, the symbol hash is used to display errors such as hash value, या ये मतलब अगर hash से begin हो रहा है मतलब error लिखा है कुछ। ठीक है, where the symbol percentage represents percentage operations and the symbol at represents it is not used to start formulas। ठीक है, बस इतना ही है। नेक्स्ट है, which out of the following is not a basic function of spreadsheet tools? So क्या क्या दिया है, एवरेज, सब्ट्रैक्ट, काउंट और मिनिमम। सो द आंसर फॉर दिस इज सब्ट्रैक्ट। ठीक है, the spreadsheet programs such as Microsoft Excel and Google Sheets provide built-in functions like average, count or minimum. However, subtract is not a built-in function. Subtraction is done using the minus operator, not through a function. ठीक है, माइनस ऑपरेटर यूज करते हैं, कोई भी फंक्शन नहीं है सब्ट्रैक्शन के लिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी एवरेज के लिए, काउंटिंग के लिए एंड मिनिमम के लिए देर आर फंक्शंस, हाउएवर देयर इज नो फंक्शन फॉर सब्ट्रैक्ट, वी विल बी यूजिंग माइनस ऑपरेटर फॉर दैट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सेल रेंज इन MS Excel? ठीक है, तो सेल रेंज के लिए क्या क्या बोला है, कलेक्शन ऑफ फॉर्मूलाज, दिस इज रॉन्ग। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। कलेक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स इज ऑल्सो रॉन्ग। कलेक्शन ऑफ चोजन सेल्स, ठीक है, it is a collection of chosen cells. In MS Excel, a cell range is a collection of selected or adjacent cells. It may form a rectangular block and can include rows as well as columns. A range is identified using a colon, ठीक है, सच एज A1 to B10, मतलब ये पूरी रेंज दी है हमको। उसका मतलब क्या हुआ, कॉलम नंबर A जो है उसका 1 जो फर्स्ट सेल है ना, वो वाला सेल से लेके कॉलम नंबर B का 10th वाले सेल तक द इंटायर रेंज इज देयर। ठीक है, ये पूरा ही विल बी इंक्लूडेड इन द रेंज, इन द सेल रेंज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज विल बी इंक्लूडेड इन इट, ऐसे करके। Next, which of the following is the popularly known extension of an Excel file? So the answer for this is .xlx. ठीक है, the most commonly used Excel file extension is .xlx, which was introduced with Microsoft Excel 2007. Earlier versions used were .xls या .xlsx. ठीक है, next है, which of the following is the popular extension of an MS PowerPoint file? So the answer for this is .pptx. Okay, the .pptx extension is used for PowerPoint presentations created in Microsoft Office 2007 and later. It is an XML based format. Older versions had used .ppt, which is now outdated.
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर्स वुड यू यूज टू ओपन अ फाइल विद अ .pptx extension? So the answer is Microsoft PowerPoint. Files with the .pptx extension are PowerPoint presentations and are open using Microsoft PowerPoint. Other options are used for databases, image editing, or drawing, and not presentations. Next, which software is best suited for storing sales data of 10 salesperson over the last 12 months in an organization and performing basic statistical analysis on it? So the answer for this will be Microsoft Excel. ठीक है, तो डेटा एंट्री वगैरह के लिए we'll be using Microsoft Excel. Microsoft Excel is best for storing data, sorting, filtering, and performing calculations. It supports charts, graphs, statistical functions such as average, total, variance, etc. But PowerPoint and Paint do not provide data analysis features. Then we have which one of the following symbols is used to start a formula? Again, repeated question है. B is equal to sign is used. ठीक है, in Excel, formulas always start with the equal sign. For example, is equal to sum या is equal to A1 plus A2 ऐसे. नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग MS एक्सेल फॉर्मूला. तो इसमें दिया है सीलिंग 18,7. तो सीलिंग फंक्शन राउंड्स अ नंबर अप टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ द स्पेसिफाइड सिग्निफिकेंस. ठीक है, तो इसमें क्या है, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 दैट इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 18 इज 21. इसमें बेसिकली होता क्या है, सीलिंग फंक्शन रहता है ना, उसमें रहेगा दो वैल्यूज़ कुछ भी दिए रहेंगे, जैसे 18 और 7 दिया है इस केस में. तो जो सेकंड वाला वैल्यू है उसके मल्टीपल्स को हम लोग देखेंगे. तो 7 के क्या क्या मल्टीपल्स हैं, 7 1 से 7, 2 से 14, 7 3 से 21, 7 4 से 28. ठीक है, ऐसे करके देर आर अ लॉट ऑफ मल्टीपल्स, है ना, ऐसे दिस लिस्ट विल कंटिन्यू. तो इन मल्टीपल्स में से विच वन इज क्लोजेस्ट टू 18? क्लोजेस्ट टू 18 मतलब इससे हल्का सा बड़ा ही होना चाहिए. इट इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 18. कौन सा है, 21 रहेगा. ठीक है, दैट विल बी द सीलिंग हियर. सो द आंसर फॉर दिस इज 21. ठीक है, सो द सीलिंग फंक्शन राउंड्स अ नंबर अप टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ द स्पेसिफाइड सिग्निफिकेंस. सो ग्रेटर दैन या इक्वल टू ये वाला होना चाहिए, तो इसमें 21 आ जाएगा. Next in MS Excel, a dash contains many worksheets. So the answer is workbook. ठीक है, this is simple. In MS Excel, a workbook is a file that contains one or more worksheets. A worksheet is a single spreadsheet page where data is entered. Next question है, in MS Excel, dash displays the name of the workbook. So the answer is title bar. ठीक है, so the title bar displays the name of the currently open workbook and the Excel application name. Next, what will be the output of the following MS Excel formula? So formula given is average निकालना है, average of 1 0 2 and 9. तो this is simple, 1 plus 0 plus 2 plus 9 upon 4. तो 12 by 4 मतलब 3 आ जाएगा. ठीक है, so the average calculates the mean of the given numbers और वो इसमें किया है. नेक्स्ट है हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन द रेंज F4 to P10. ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे हम लोग. F का मतलब कॉलम नंबर क्या है, F. फिर F का भी कौन सा वाला हमें रो चाहिए, 4th रो. तो यहाँ पे 4th रो रहेगा, वहाँ से वो वाले सेल से लेके P. P और F के बीच में कितना डिफरेंस है, ABCDEF GHIJ KLMNOP. ठीक है, P का 10th वाला चाहिए हमें. ऐसे अज्यूम कर लो कि ये है 10th वाला इसका P का. ठीक है, तो कितने, ये तो नहीं आएगा, कितने कॉलम्स आ गए. बेसिकली वील जस्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉलम्स
एंड नंबर ऑफ रोज। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमको नंबर ऑफ सेल्स पता चल जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितना, यहाँ पे 10th वाला ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें कॉलम्स कितने हो गए, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, सेकेंड, थर्ड, यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। 11 कॉलम्स हो गए। और नंबर ऑफ रोज क्या कर लेते हैं काउंट, है ना। तो ये फर्स्ट रो हो गई 1 वाली, सॉरी 4 वाली, है ना। उसके बाद में 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 रोज हो गई। तो वील मल्टीप्लाई दीज, तो कितना आ रहा है, 77 आ रहा है। सो दैट इज द नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। सो द आंसर विल बी डी 77। नेक्स्ट है, इन एम एस एक्सेल द डिस्प्ले डैश डिस्प्लेज द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल। तो इसका आंसर क्या रहेगा, फॉर्मूला बार, ठीक है। इफ यू क्लिक ऑन अ सेल दैट बिकम्स द एक्टिव सेल, और उसका जो भी कंटेंट्स है दैट विल बी शोड इन द फॉर्मूला बार। द फॉर्मूला बार डिस्प्लेज द डेटा और द फॉर्मूला स्टोर्ड इन द एक्टिव सेल। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एम एस एक्सेल फॉर्मूला। तो क्या दिया है, सम ऑफ, ये नंबर्स दिए हैं। सो बेसिकली इसको देखते हैं हम लोग। एक्सेल ये पावर्स दिए हैं, ठीक है, पावर में दिया है इनका। तो इसमें ऐसे दिया है, एक्सेल इवैल्यूएट्स एक्सपोनेंट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो अच्छा, इसको वेट, आई हैव टू सी दिस वंस के कैसे किया है इसको इवैल्यूएट। वैसे ये 1 के एक्सपोनेंट्स दिए हुए हैं, 1 टू द पावर 2 टू द पावर 3 ऐसा कुछ दिया है इसमें, है ना। बट ये 8 कैसे हो गया, आई हैव टू चेक कैसे कर रहा है ये एक्सेल। ठीक है, मेरे को समझ आ गया। तो ये राइट टू लेफ्ट एक्सपोनेंट्स को कैलकुलेट करता है। तो इसको बेसिकली क्या दिया है इन्होंने, सम ऑफ, एक तो 2 है नंबर, उसके बाद कॉमा करके दिया है 1 का पावर 2 और 2 का पावर 3, ठीक है। इन दोनों चीज़ों का हमें सम निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, फिर से लिख लो, सम 2 कॉमा 2 टू का पावर 3 कितना होता है, 2 इंटू 2 दैट इज 8, है ना। 2 क्यूब, 1 का पावर 8 आ गया, ठीक है। तो इन दोनों का सम क्या रहेगा, दैट इज सम ऑफ 2 कॉमा 1, दैट विल बी 2 प्लस 1 कितना होता है, 3। सो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। सो दिस वॉज अ सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इन एम एस एक्सेल व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट रेफरेंस ऑफ द सेल लोकेटेड एट कॉलम एल एंड रो 5। अच्छा, तो हमें एड्रेस पूछा है सेल का, उसका वैसे क्या दिया है, इट इज द सेल इज लोकेटेड एट कॉलम एल एंड रो 5। तो ये रहेगा उसका, एन एब्सोल्यूट रेफरेंस फिक्सेस बोथ द कॉलम एंड द रो यूजिंग डॉलर साइंस, ठीक है। तो दोनों के सामने डॉलर साइन लग जाएगा, $L और $5। और आपको पता ही है कि जब व्हेन वी हैव टू राइट द सेल एड्रेस, द कॉलम कम्स फर्स्ट एंड देन वी राइट द रो, ठीक है। पहले कॉलम देन रो लिखते हैं। तो जैसे कॉलम नम का अल्फ़ाबेट्स में होता है, जो भी कॉलम है, जैसे एल है एंड द रो विल बी 5। हाउएवर सिंस दे आर
asking for an absolute reference, then therefore we'll be adding a dollar sign in front. Next है Dash is a spreadsheet developed by Microsoft for Windows and Mac operating system. So the answer for this is MS Excel. ठीक है, Microsoft Excel is a spreadsheet application developed by Microsoft for Windows, Mac operating system, Android, and iOS. Next, which function is used in MS Excel to add all the numbers in a cell range? So, to add all numbers in a cell range, sum option is used. ठीक है? So, sum function adds all the numerical values in a specified range of cells. Then we have what will be the absolute address of the last cell of the range before F9. तो बेसिकली हमको पूछ रहा है कि लास्ट सेल जो रहेगा, इसको वील जस्ट ड्रॉ इट यहाँ पे, बी जो कॉलम है उसका फोर्थ सेल है, और एफ बी सी डी ई एफ कॉलम का नाइन्थ सेल. तो इसका जो लास्ट वाला सेल है उसका वो सेल एड्रेस पूछ रहा है हमको. तो लास्ट सेल का सेल एड्रेस क्या रहेगा इसमें? लास्ट सेल विल बी दिस. ये सेल रेंज बन जाएगी ना. सॉरी, ठीक है, 4 5 6 7 8. ऐसा कुछ बन जाएगा. तो इसमें लास्ट सेल क्या ये वाला है, दैट इज F9 वाला है, वही रहेगा. और एब्सोल्यूट भी पूछा है तो दोनों के सामने डॉलर साइन लगा देंगे बस. द आंसर इज $F $9. नेक्स्ट है इन MS Excel dash displays the address of the active cell. So the answer for this is name box. ठीक है, फॉर्मूला बार में क्या होता है? The contents of an active cell, whereas in the name box the address is displayed. ठीक है, so the answer is the name box. The name box displays the address of the currently active cell. So the next question is, a Microsoft Excel file is also known as a what? So the answer is workbook. ठीक है, this is a simple question. Then which of the following indicates an active cell in MS Excel 2010? So the answer is boulder grid lines. ठीक है, तो जैसे ये नॉर्मल ग्रिड है MS Excel का, यहाँ पे A B C D ऐसे लिखा रहेगा, और यहाँ 1 2 3 4 5 ये नॉर्मल ग्रिड है ना. इसमें कोई भी अगर सेल इज एक्टिव, उसका जो बॉर्डर्स रहेंगे ना, दे विल बी डार्कर. ठीक है, बोल्डर बॉर्डर्स रहेंगे, तो वही लिखा है यहाँ पे. नेक्स्ट है टू अप्लाई सेल बॉर्डर्स इन MS Excel 2019 विच ग्रुप मस्ट बी सिलेक्टेड अंडर द होम टैब. तो इसका आंसर क्या है? फॉन्ट. The border options are located in the font group under the home tab. This is very important. ये हमने थ्योरी में भी पढ़ा था कि हमें I had remarked then also कि हमें लगता है कि font group में only font style या font size दिया होगा. However, even the border options are present in the font tab itself. ठीक है, so this is very important. Next है what is the result of this operation in MSA, this formula in MS Excel 2019. ठीक है, तो दिया क्या है? और the Excel follows operator precedence, that is division and multiplication first from left to right. ठीक है, तो ये बॉड मास टाइप ये लोग भी फॉलो करते हैं. ऐसे दिया है, इसका क्या रहेगा? सबसे पहले वील बी डूइंग डिविजन फर्स्ट, तो 2 by 2 विल बिकम 1. आफ्टर दैट विल बी मल्टीप्लाइंग. ठीक है, तो
क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 प्लस 2 बचा, सो द आंसर फॉर दिस विल बी 4, ठीक है। जो बॉड मास रूल्स होते हैं ना वैसे सिमिलर चीज़ रहता है इसमें भी। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द MS Excel फॉर्मूला सीलिंग B110 over the sample worksheet, ठीक है। सो इन MS Excel the ceiling function is used to round the number up to the nearest specified multiple, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूरा आया नहीं है, देयर इज अ सैम्पल वर्कशीट गिवन इन द क्वेश्चन, उसमें B1 में कुछ वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। B1 में क्या वैल्यू दिया है, 45, ठीक है। B1 वाला जो सेल है ना उसमें 45 लिखा है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या होगा, सीलिंग 45, 10। तो इसमें मैंने पहले भी क्या बताया था, वी विल राइट द मल्टीपल्स ऑफ द सेकेंड नंबर। इसके मल्टीपल्स क्या है, 10 है, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे करके रहेगा, ठीक है। और इसमें नियरेस्ट बट ग्रेटर दैन दिस वन क्या रहेगा, 50, ठीक है। सो द आंसर फॉर दिस ऑपरेशन इज 50। तो यहाँ पे वही लिखा है, in MS Excel the ceiling function is used to round a number up to the nearest specified multiple. According to the given sample worksheet, the value of cell B1 is 45. So ceiling 45, 10 rounds 45 up to the nearest multiple of 10, which is 50. Therefore, the result will be 50. Next, what will be the result of the MS Excel formula floor B5, 16 over the sample worksheet? Again यहाँ sample worksheet दिया नहीं है, but I'll just tell you कि B5 सेल में क्या लिखा है। B5 सेल में 35 वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। सो हमें फ्लोर ऑप्शन बताना है। इन MS Excel द फ्लोर फंक्शन राउंड्स अ नंबर डाउन टू द नियरेस्ट स्पेसिफाइड मल्टीपल, ठीक है। तो इसमें अगेन वी विल बी राइटिंग मल्टीपल्स ऑफ द सेकेंड नंबर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फ्लोर 35, 16, ठीक है। 16 के थोड़े से मल्टीपल्स लिख लेते हैं। 16 रहेगा, 32 रहेगा, 48 रहेगा, ठीक है। इतने से ही हो जाएगा काम। फ्लोर में जो इसके सबसे पास है बट लोअर दैन दिस वो करते हैं, सीलिंग में इसके सबसे पास बट ग्रेटर दैन दैट, है ना। तो इसमें क्या रहेगा, 32 विल बी दी ऑप्शन। दिस इज क्लोजेस्ट टू 35, हाउएवर इट इज लोअर दैन 35, ठीक है। सो द आंसर फॉर दिस विल बी 32, ठीक है। सो इन MS Excel द फ्लोर फंक्शन राउंड्स अ नंबर डाउन टू द नियरेस्ट स्पेसिफाइड मल्टीपल। According to the sample worksheet, the value of B5 is 35. So floor 35, 16 rounds 35 down to the nearest multiple of 16, which is 32. Hence the output is also 32 here. Next है, what will happen if you select the cells B2 to D2 and click on auto sum? तो देखो इसमें वही सैम्पल वर्कशीट को दिए है, हमारे पास है नहीं वो, इमेज नहीं आया पूरा इसमें। In MS Excel, the AutoSum function adds the value of selected adjacent cells and displays the result in the next empty cell, ठीक है। This is important. Then according to the given worksheet, the values in the cell B2 and D2 are 10 and 20 respectively, ठीक है। So therefore the AutoSum will calculate their total and display 30 in cell E2. Therefore the correct answer will be B. तो इसमें बेसिकली जो पूरा क्वेश्चन है ना उसमें B2 और D2 में क्या क्या वैल्यूज दिए हैं। B2 में दिया है 10, D2 में दिया है 20, ठीक है। तो इन दोनों को सिलेक्ट करके ऑटो सम पे क्लिक करेंगे अगर हम लोग, तो क्या आएगा, द नेक्स्ट एम्प्टी सेल जो भी रहेगा ना उसमें द सम ऑफ दीज टू सेल्स विल बी
पुट। तो नेक्स्ट एम्प्टी सेल विल बी E2, ठीक है। E2 में क्या वैल्यू आएगी, 20 + 10 दैट बिकम्स 30. So the answer will be E2 will contain 30. So that is the B option. ठीक है. Next, what is the absolute address of the cell containing the value 213? Absolute address पूछा है और ये again वो sample worksheet के through है. So since we do not have that, we'll just read it directly. In MS Excel, the absolute cell address is used to fix both the column and the row using the dollar sign. ठीक है. The value 213 जो sample worksheet है उसमें वो E5 में located है 213. ठीक है. सो उसका एब्सोल्यूट एड्रेस क्या हो जाएगा, दोनों के सामने डॉलर साइन लगा देंगे हम लोग, $E$5. ठीक है. सो this will ensure that both the column as well as the row will remain unchanged when copied. अगर डॉलर साइन लग जाता है ना, then that will become an absolute reference, and so even if you copy it, the column and the row remains unchanged. So the answer for this will be $E$5. That is the first option. Next step, what will be the result of the MS Excel formula ceiling E5 500 over the sample worksheet? तो sample worksheet मेरे पास नहीं है, but E5 में उसमें 50 लिखा है. ठीक है. तो we can write this as ceiling 50, 100. ठीक है. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो सेकेंड वाला है उसके मल्टीपल्स लिखने होते हैं हमको, है ना. सेकेंड 100 की क्या क्या मल्टीपल्स हैं, 100 1 ज़ा 100 होता है, फिर 100 2 ज़ा 200, ये सब आने लग जाता है. ठीक है. तो इसमें अब नियरेस्ट मल्टीपल टू दिस विल बी 100. फाइन. सो 100 का सीलिंग निकालने के लिए वी हैव टू गो फॉर द नंबर विच इज क्लोजेस्ट, मल्टीपल विच इज क्लोजेस्ट बट ग्रेटर दैन द गिवन वन. तो 50 का क्लोजेस्ट बट थोड़ा सा ग्रेटर मल्टीपल क्या इस केस में क्या रहेगा, 100 रहेगा. सो द आंसर फॉर दिस विल बी A, 100. ठीक है. वही लिखा है, द सीलिंग फंक्शन राउंड्स द नंबर अप टू द नियरेस्ट स्पेसिफाइड मल्टीपल. According to the sample worksheet, the value in the cell E5 is 50. So ceiling 50, 100 rounds 50 up to the nearest multiple of 100, which is 100. ठीक है. Hence the result is 100. Next, what will be the result of the MS Excel formula average B2 D4 over the sample worksheet? Again, I do not have the sample worksheet. However, ये क्या रेंज दी हुई है. ठीक है. तो रेंज क्या है, B2 से B2 क्या हो जाएगा, कॉलम B रो नंबर 2. तो यहाँ पे है अगर, फिर वहाँ से लेके D4 कॉलम नंबर D बट रो 4. ठीक है. तो दैट बिकम्स BC भी आएगा इधर. 2 3 4. तो यहाँ पे ऐसे रहेगा. ठीक है. So this is the range. This is the range basically. ठीक है. इसमें क्या क्या नंबर्स दिए होंगे, अगर if we had the sample worksheet we would have known the numbers given are 20 20 30 40 40. ठीक है. तो इन सब का टोटल करके we just have to find the average, so that will come out to be 150. नॉर्मल जो मैथमेटिक्स फॉर्मूलाज हैं उससे करेंगे, and the answer for this will be 30. ठीक है. So the next question is, what will happen if you select the cell range B2 to D4 and click on auto sum? ये हो चुका है शायद एक बार, है ना. तो एक सैम्पल इन्होंने वर्कशीट दिया हुआ है. आई हैवंट गॉट दिस ऑन माय डॉक्यूमेंट. ठीक है. उसमें जो पेपर आया था उसमें एक सैम्पल वर्कशीट दिया हुआ था, उसमें B2 to D4 में हमको देख के वी हैड टू फाइंड दी ऑटो सम. B2 और D4 के बीच में दीज फॉलोइंग देखो, कॉलम
When AutoSum is applied column wise to a selected range, Excel calculates the sum of each column separately. ठीक है, तो 3 कॉलम्स हैं, बी, सी और डी, है ना, और वहाँ के 2 से लेके 4 तक, 2, 3, 4, इनका सम, जैसे बी का सम यहाँ पे 5th वाले में, B5 में बी कॉलम के सारों के सम लिख लेंगे, देन C5 में सी कॉलम के सारे सम, और D5 में डी कॉलम का सारा सम आ जाएगा। ठीक है, तो वो ये हो जाएगा, B5 में 40 दिया रहेगा, C5 में 30 एंड D5 में 80। वही है बस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिलेटिव एड्रेस ऑफ द सेल कंटेनिंग 30। तो दिस इज गिवन अगेन, वो एक कोई वर्कशीट दी हुई है, सैम्पल वर्कशीट, उसमें 30 जो सेल है उसका सेल एड्रेस बेसिकली C3 है। ठीक है, C3, तो relative address will be C3 whereas the absolute address will be $C $3. So in MS Excel, a cell address helps identify a cell by its column and row. The value 30 is located in the cell C3. According to the question's requirement, the correct address format shown in the answer key will be $C $3. तो D, ठीक है, $C $3 रिलेटिव एड्रेस और एब्सोल्यूट एड्रेस का शायद सेम मीनिंग ही लिया है इन लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच टैब इज द ग्रुप बाय पेन अवेलेबल। तो ग्रुप बाय जो ऑप्शन होता है ना, दैट इज अवेलेबल इन व्यू ऑप्शन, व्यू पेन, व्यू ग्रुप में अवेलेबल होता है। द ग्रुप बाय पेन इज अवेलेबल अंडर द व्यू टैब. इट इज यूज्ड टू ग्रुप डेटा एंड अप्लाई सॉर्टिंग इन स्प्रेडशीट्स। ठीक है, सॉर्टिंग करने के लिए यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मूला। सो कुछ भी इन्होंने सैम्पल वर्कशीट दिया रहेगा और उसमें दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड आउट द सम ऑफ B1 B2, ये सारे सेल्स का सम निकालना है। तो दिस विल बी इजी, जो भी सेल वैल्यूज दिए हैं उनको नॉर्मल ऐड कर देंगे एंड विल गेट 400 एज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन नॉट बी यूज्ड टू एडिट द कंटेंट्स ऑफ अ सेल इन MS Excel। सो क्या है, डबल क्लिकिंग द सेल, हमें कैन नॉट बी यूज पूछा है ना, तो डबल क्लिकिंग से हो जाता है एडिट। देन प्रेसिंग द F2 की, उससे भी वी कैन एडिट द सेल कंटेंट्स। फॉर्मूला बार में भी वी कैन edit the cell contents. However, pressing Alt or Enter, this is not used for editing the cell contents, but rather it is used to insert a new line within a cell. ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे, Alt plus Enter is used to insert a new line within a cell and not to edit the cell content. Next, Radhika wants to maintain the test scores of students in a tabular format and perform calculations to prepare the result sheets. Which Microsoft Office software is best suited for this? So the answer will be MS Excel. ठीक है, MS Excel is a spreadsheet program used for storing data in rows and columns, performing calculations, analysis, preparing results, etc. Next है, Ramya has started working on an office tool assignment involving many calculations on tabulated data. Which tools should she use? So the answer for this will be MS Excel. ठीक है, ये भी simple है. Next है, dash is the file extension of an Excel file, so that answer will be .xls. फिर which of the following is a valid range in MS Excel? तो ये इससे यूज़ करते, कोलन से भी usually signify a range in MS Excel. ठीक है, so a range is written using a colon between starting and ending cell references such as A2 C5. Which of the following elements is unique for each cell in an Excel worksheet? हर सेल के लिए यूनिक चीज़ क्या होती है? सेल एड्रेस इज द यूनिक थिंग. ठीक है, फाइल नेम कॉमन होता है, रो हेडिंग कॉलम हेडिंग कैन ऑल्सो बी कॉमन.
However, cell address is unique for each cell. So the next question is, when working in an Excel worksheet, if you see hash in a column, what is wrong? So the answer for this is the column is too narrow. When hash appears, it means the column width is insufficient to display the full cell content. Okay? Next, which of the following options contains extensions of MS Office files? So the options are XLS, अच्छा ये सारे options हैं. तो MS ऑफिस की फाइल्स PDF तो नहीं होता है MS ऑफिस में. देन PPTX होता है, DocX भी है, XLX भी है. सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी. ये सब भी नहीं, XIS नहीं होता है, PDF नहीं होता है. ठीक है. सो द ऑप्शन विल बी दिस वन. एक्सेल का .XLSX, वर्ड का .docx, पावर पॉइंट का PPTX. These are official Microsoft Office file extensions. Next, which of the following tasks can be done using MS Excel? So the options are preparing students' results. So this can be done. For storing names of Indian classical singers with the Gharana, this can also be done. Playing music video, नहीं ये नहीं कर सकते. So the answer for this will be A and B only. ठीक है. Next, the numeric data entered in Excel worksheet is dash aligned by default. So the answer will be right aligned. ठीक है. तो right aligned होता है पूरा डेटा. And देखो, the numeric data in Excel is right aligned, whereas the text is left aligned. This is very important. ठीक है. Remember this properly कि जो numeric data that will be right aligned, whereas the text which is entered will be left aligned. And after this, which of the following is best suited for preparing the result of a class of students? So result prepare करने के लिए MS Excel will be the best option because it helps in data storage. Database management के लिए MS Excel is the best. MS Excel is best suited for preparing results as it efficiently manages rows, columns, formula, and calculations. Next is MS Excel spreadsheet. So in MS Excel spreadsheet software, the values in cells A1, B1, C1 are 2, 3, 4 respectively, and the values in cells A2, B2, and C2 are 5, 6, and 7 respectively. If the formula in cell D1 is as given here, what will be displayed in cell D2 if the formula in cell D1 is copied and pasted into cell D2? ठीक है. तो वैसे दिया क्या है, A1 प्लस $C1, $A1 और B1 ऐड करा है. तो A1 का वैल्यू ये सारे दिए हुए हैं, है ना. और फॉर्मूला गिवन इन द क्वेश्चन इज दिस. सो वी विल सिंपली रिप्लेस द value, the column numbers, cell addresses with their respective values. ठीक है. A1 की जगह 2 रहेगा, C1 की जगह 4, देन डिवाइडेड बाय A1 अगेन 2, और फिर उसके बाद B1 दैट इज 3. सो हियर वी विल बी यूजिंग ये ब्रैकेट्स में. सो बॉड मास का ये जैसे ही रहता है इसमें भी सिस्टम. 4 plus 2 that will become 6 by 2 plus 3. 6 by 2 becomes 3 and the answer will be 6. ठीक है. और when the formula is pasted, ये D1 में रहेगा. ठीक है. D1 में ये रिजल्ट आएगा. However, if the formula is pasted into D2, फॉर्मूला क्या था, ये था, है ना. अगर हम D2 में पेस्ट कर देंगे तो A1 will become A2 because यहाँ पे वो वाला एड्रेस नहीं दिया हुआ था. The absolute reference address was not given. ठीक है. उसके बाद में $1 की जगह we will put the normal one because this is the absolute reference. This is also the absolute reference, पर B1 भी B2 हो जाएगा. ठीक है. So we will accordingly replace the values और answer will come out to be 10.5. ठीक है. So the next question is, considering the content of the first cell of a worksheet as 10, the value of the Excel formula, that is $A$1 upon 4 is, तो $A$1 जो first cell of a worksheet is A1, है ना.
उसका हमने फिक्स कर दिया है रेफरेंस, तो $1 विल बी 10। ठीक है, 10/4 का वैल्यू पूछ रहा है वो, सो द आंसर विल बी इजी, इट इज 2.5। ठीक है, सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। जो ऊपर क्वेश्चन है उसको मैं एक और बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। द फॉर्मूला विच वॉज गिवन टू अस वॉज दिस, है ना, दिस वॉज द ओरिजिनल फॉर्मूला गिवन टू अस। इसमें देखो, वी डू नॉट हैव टू कैलकुलेट दिस, वी कैन डायरेक्टली गो टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, इसको करने के लिए कैसे रहेगा, सिंस दीज टर्म्स आर फिक्स्ड, जिसमें डॉलर साइन लगा है दैट मीन्स कि दैट टर्म इज फिक्स्ड। हाउएवर जो डॉलर साइन नहीं लगा है, जिसमें जो A1 है और B1 है, दैट इज नॉट फिक्स्ड, द वैल्यू विल चेंज। वैल्यू कब चेंज होगा, इफ यू कॉपी दिस फॉर्मूला एंड मूव इट टू सम अदर रो, है ना, तो द वैल्यूज ऑफ दीज विल चेंज अकॉर्डिंगली। जैसे D1 से उठा के उन्होंने D2 में ड्रैग करके दे हैव पुट, मतलब पेस्ट कर दिया है ना, सो देन रो चेंज हो गया, D2 हो गया रो, सो अकॉर्डिंगली इसका रो भी चेंज हो जाएगा, इसका रो भी चेंज हो जाएगा। हाउएवर ये C का नहीं होगा, देखिए ये वाला रो चेंज हो जाएगा और ये वाला रो भी चेंज हो जाएगा। दिस वोंट चेंज बिकॉज this is fixed. Similarly this won't change either because it is fixed properly। ठीक है, तो न्यू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, once we move it to D2, the new formula will be A2 plus C$1 upon $A, this is in brackets है ना, $A$1 plus B2। ठीक है, तो अभी इसमें we'll just put the value of A2, A2 ये था, C1 की वैल्यू थी 4 अपॉन A1 की वैल्यू था 2 और B2 की वैल्यू है 6, तो 9/2 कितना हो जाता है, 4.5 प्लस 6, सो द आंसर विल बी 10.5। ठीक है, सो आई हैव जस्ट क्लैरिफाइड वो पुराना क्वेश्चन। नेक्स्ट है, which of the following MS Excel features can be used to create labels that span multiple columns। तो लेबल क्रिएशन के लिए we can use merge and center option। ठीक है, तो merge and center feature in MS Excel is used to combine multiple adjacent cells into a single cell, which is useful for creating labels that span across multiple columns। ठीक है, नेक्स्ट है कीबोर्ड शॉर्टकट टू ऐड अ न्यू स्लाइड टू योर MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड ऐड करना है तो Ctrl+M यूज़ करते हैं। ठीक है, वेराज अगर न्यू पेज किसी में ऐड करना है हमें वर्ड वगैरह में, देन Ctrl+N इज यूज। ठीक है, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ MS एक्सेल एक्सप्रेशन इज, अच्छा इसका वैल्यू हमें बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16/8, 8 2 16 प्लस 3/3 इज 1 - 3, तो क्या 0 आएगा। ठीक है, सो द आंसर फॉर दिस इज D, 0। ठीक है, so the next question is the value of the Excel expression floor 12.6 10 is what। so floor में अभी हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चंस में भी कि 10 के पहले तो we'll write down all the multiple, all नहीं मतलब थोड़े से multiples लिखेंगे, है ना, so these are the multiples of 10। ठीक है, जो भी सेकेंड वाला डिजिट है उसके मल्टीपल्स लिख देंगे सेकेंड नंबर के। उसके बाद में जो फर्स्ट नंबर है उससे सबसे क्लोजेस्ट मल्टीपल कौन सा है वो देखेंगे, एंड फॉर सिंस फ्लोर दिया है सो वील हैव टू फाइंड द मल्टीपल विच इज क्लोजेस्ट बट स्मॉलर दैन द गिवन नंबर। ठीक है, तो फ्लोर के लिए 10 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, so the floor function rounds a number down to the nearest multiple of the specified significance। ठीक है, वो हो गया। अब इसके एग्जांपल्स और जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, जैसे 10 और 3 दिया है तो 3 के मल्टीपल्स क्या हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 4 ज़ा 12, ऐसे करके, है ना। अब नंबर क्या है 10, तो इसका फ्लोर निकालना है तो मल्टीपल विच इज क्लोजेस्ट टू 10 बट स्मॉलर दैन 10, सो दैट विल बी 9। Similarly, for this, we'll write down the multiples of 7, 7, 14, 21, 7 3 ज़ा, ठीक है, ऐसे करके
है ना। और सिंस फ्लोर है, फ्लोर के लिए द आंसर क्लोजेस्ट टू 40 विल बी 35, क्लोजेस्ट टू 40 एंड स्मॉलर देन 40 तो 35 रहेगा। अगर यहाँ सीलिंग दिया होता देन वी वुड हैव गॉन विथ 42। ठीक है, सो दिस इज हाउ फ्लोर और सीलिंग क्वेश्चंस आर डन। नेक्स्ट है द क्वेश्चन, द एरर वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द एक्सेल एक्सप्रेशन, ये वाला विल बी व्हाट। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये जो फॉर्मूला है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सम दिया है 1 का कॉमा, जैसे अपोस्ट्रोफीज के बीच में ए दिया, अपोस्ट्रोफी नहीं है ये, कोड सिंबल के बीच में ए दिया है, ठीक है, अपॉन 0। तो इसमें जो दिस ये वाली वैल्यू है ना, दिस इज एन इनवैलिड डेटा टाइप। ठीक है, सो द फॉर्मूला यूजेस एन इनवैलिड डेटा टाइप inside the sum function. Because of this incorrect data type, the Excel returns the value, returns the value error। ठीक है, वैल्यू गलत है इसमें, इनवैलिड डेटा डाला हुआ है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ द एक्सेल एक्सप्रेशन, ये वाला विल बी व्हाट। सो क्या हो जाएगा इसमें, हेलो, दिस इज नॉर्मल कैलकुलेशन, तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, फिर 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। तो एक्सेल में ना यू यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम द, ऐसे करेंगे इसको, 2 8 डिवाइडेड बाय 4 क्या हो जाएगा 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड देन 2, 4 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 2, 3 प्लस 2 विल बी 5। इन तीनों का एवरेज निकालना है हमको, सो दैट विल बी 6/3, सो आंसर विल बी 2। ठीक है, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ द एक्सेल एक्सप्रेशन, ये वाला विल बी व्हाट। सो क्या क्या वैल्यूज दिया है, -1 है और एक है 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4, लेफ्ट टू राइट चलेंगे हम लोग, तो 8 डिवाइडेड बाय 4 यहाँ लिख लो, लेफ्ट टू राइट। एक तो बॉड मास भी फॉलो होता है और एक लेफ्ट टू राइट चलना है, जैसे 2-3 डिविजन साथ में दिए ना। 8 डिवाइडेड बाय 4 इज 2, सो 2 डिवाइडेड बाय 2 विल बिकम 1, तो यहाँ 4 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो -1, 5, इन दोनों का सम क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, सो द आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरर वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द एक्सेल एक्सप्रेशन 0/0 इज व्हाट। इसमें क्या आएगा, डिवाइडिंग एनी नंबर बाय 0 इन एक्सेल रिजल्ट्स इन, ये वाला एरर, DIV अपॉन 0 वाला एरर, तो ये आ जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ द एक्सेल एक्सप्रेशन दिस। तो अगेन सिंपल क्वेश्चन है, 1 माइनस 2 -1 आएगा, 2 माइनस 3 -1 और 3 माइनस 4 भी -1 आएगा। तो वील हैव टू ऐड दीज -3 अपॉन 3 एवरेज करने के लिए, सो आंसर विल बी -1। नेक्स्ट है टू कॉपी एन इमेज फ्रॉम वन स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन टू अनदर स्लाइड विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन विल बी यूजफुल। तो इसके लिए क्या रहेगा, नॉर्मल कंट्रोल प्लस सी विल बी यूज्ड। ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स इज फॉर कट, कंट्रोल इज सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल बी विल बी बोल्ड एंड कंट्रोल प्लस आई वुड बी फॉर इटैलिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है I am a shortcut key which is used to undo your last action while working on MS Word। तो इसका आंसर क्या है, कंट्रोल Z। ठीक है, इट इज़ यूज्ड टू undo the last performed action in MS Word or other applications। नेक्स्ट है to copy an image from one slide in presentation and then paste it on another slide of the same presentation, choose the correct shortcut key order। तो क्या कॉपी करना है और उसके बाद पेस्ट कर देना है, तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ठीक है, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। देन विच कीबोर्ड शॉर्टकट विल हेल्प यू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन फाइल इन MS पावर पॉइंट। तो न्यू प्रेजेंटेशन फाइल बनानी है, उसके लिए वील बी यूजिंग कंट्रोल N, एंड इफ यू वांट अ न्यू स्लाइड देन यू विल बी यूजिंग कंट्रोल प्लस M। ठीक है, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ एन MS पावर पॉइंट फाइल। सो .ptx होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पावर पॉइंट व्यू। सो क्या क्या ऑप्शन है, रीडिंग व्यू,
प्रेजेंटेशन व्यू, एक्सेल व्यू और स्लाइड सॉर्टर, तो एक्सेल व्यू नहीं होता है पावर पॉइंट में, ठीक है। नेक्स्ट है डैश आर द विजुअल इफेक्ट्स विच अपीयर इन पावर पॉइंट व्हेन वन स्लाइड मूव्स टू अनदर स्लाइड। तो इनको हम लोग स्लाइड ट्रांजिशंस बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में ऐसे कुछ भी फ्लोट करके आ रहा है अगले साइड का सामान या ऐसे कुछ भी, तो उसको स्लाइड ट्रांजिशंस बोलते हैं। Slide transitions are visual effects that appear when moving from one slide to another during a PowerPoint presentation. Then we have what is the default size of a PowerPoint slide. So 16:9 होता है PowerPoint slide का size. ये सेम वहाँ पे हमारे जो सोशल मीडिया चैनल्स है ना, जैसे यूट्यूब पे भी 16:9 चलता है, ठीक है, फॉर लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़। So try to remember this. Next, Partham is interested in making a digital presentation for marketing his company's new product using open source software. Which of the following will you suggest? ठीक है, तो since he has to make a digital presentation uh, using open source software, so I would suggest Impress. ठीक है, MS Word वगैरह proprietary softwares हैं which which are not free, ठीक है। Impress is an open source presentation software included in LibreOffice used for creating slide presentations, ठीक है। Identify the most commonly used file extension of a presentation document of Microsoft PowerPoint for ये फिर से repeated question है .pptx। Next है PowerPoint is an example of application software. This is very simple. Next, to add motion effects between one slide going and another slide coming, which feature is used? So slide transition is used for doing this, ठीक है। Next, in MS PowerPoint presentations, which of the following options is used to save changes made under a different name at the same location or at another location? तो उसके लिए सेव एज करते हैं यूज़, है ना। सेव इज़ फॉर द सेम लोकेशन, मेरा सेव एज इज़ फॉर saving some file at a different location. So in MS PowerPoint, save as is used to save a presentation with a different name at the same location or at a different location. Save as is different from the normal save command because it allows the user to create a new copy of the file or save the file under a new name without overwriting the original one, ठीक है। Next है when you create a new MS PowerPoint file, how many slides are there by default? So the answer is 1, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपने देखा होगा पावर पॉइंट खोलते हैं तो देयर इज़ अ सिंगल स्लाइड और उसमें यहाँ लिखा होता है क्लिक हियर टू ऐड टाइटल और क्लिक हियर टू ऐड टेक्स्ट, ऐसे करके लिखा रहता है ना। सो दैट इज़ 1 स्लाइड। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ, फिर से सेम क्वेश्चन, वही .pptx रहता है उसका एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट व्यू ऑफ एन MS PowerPoint प्रेजेंटेशन। तो डिफ़ॉल्ट व्यू क्या रहता है, नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल इज द डिफ़ॉल्ट व्यू इन MS PowerPoint. In this view, users can edit the slides, add content, insert slides, and apply formatting. Slide sorter view shows thumbnails, while the slide show view is used only for presentation purposes. Next, which of the following elements together make a theme for a presentation in MS PowerPoint? तो all of these आएगा इसमें, colors, fonts, background, effects, सब कुछ आता है, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज विल बी द आंसर फॉर दिस। In MS PowerPoint 2010, a theme consists of a complete set of colors, fonts, backgrounds, and effects. All these elements together provide a consistent visual appearance to the presentation. ठीक है। Next, which of the following paths is incorrect with respect to MS PowerPoint 2010? So क्या क्या दिया है, इंसर्ट में इनकरेक्ट वाला बताना है ना। इंसर्ट, मीडिया और स्क्रीनशॉट। देखो, screenshot is available in the insert tab but not under the media group, so this one will be wrong, ठीक है। और बाकी क्या है, insert illustrations, smart art, ये सही है। insert images, pictures और online pictures, ये भी सही है। insert media video, this is also correct. This one is wrong because screenshot is not available under media group.
नेक्स्ट है इन MS PowerPoint 2019 which option is used to collapse the ribbon so that only the tab names are displayed. So the option used for this is collapse. ठीक है. The collapse option reduces the ribbon size so that only the tab names are visible. This provides more working space on the screen while editing the slides. Which of the following options contains color scheme along with custom formatting styles, fonts, layouts, etc.? So the answer for this is themes. ठीक है. In MS PowerPoint 2019, themes include predefined combinations of colors, fonts, layouts, and visual effects. Themes help maintaining the consistency across all slides in a presentation. Next है in MS PowerPoint 2010, which keyboard shortcut helps us to insert a new slide in a presentation? So new slide के लिए Control M use होता है. This is a repeated question. ठीक है. And Control N is used for a new presentation altogether. Control O is used for opening a file and Control W closes the current file. ठीक है. Next, which keyboard shortcut is used to open the font window in MS PowerPoint where you can adjust the font size, style, type, etc. So for opening a new tab, nahin, for opening the font tab, font window tab, you have to use Control plus T. ठीक है. Font dialog box उससे open हो जाएगा, allowing users to change the font size, style and type. If you have 50 slides in your MS PowerPoint presentation and you want to start the slideshow from the 10th slide, which key should you press? So for this you should press Shift plus F5. ठीक है. Shift plus F5 basically starts the slideshow from the currently selected slide. ठीक है. So this is very important. अगर कोई भी currently selected slide से हमें start करना है slideshow को तो उसको Shift plus F5 दबाने से start होगा. Or if you just press F5 then the slideshow will start from the first slide itself. ठीक है. In MS PowerPoint 2010, which ribbon tab helps in adding a new slide? So for adding a new slide, you have to go to Home. ठीक है. The Home tab contains the new slide option, which is used to insert new slides into a presentation. In MS PowerPoint, which viewing mode shows no colors except shades of grey? So the answer for this is grayscale. ठीक है. So the grayscale view displays slides using only shades of grey. It is useful for checking how the slides will appear when printed in black and white. Now Garima wants to create an audiovisual presentation to explain the latest examination pattern to all teachers of a school. Which software is best suited for this purpose? So the answer will be MS PowerPoint. ठीक है. MS PowerPoint is an application software used to create multimedia presentations. It is best suited for explaining concepts visually and interactively. Then we have which Office tool uses the term transition as one of its functionalities? Okay, so the answer for this is MS PowerPoint. MS PowerPoint में slide transition का एक option रहता है. Transitions are special visual effects applied when moving from one slide to the other, and this feature is specific to MS PowerPoint. Next, which software is most preferred to design a multimedia presentation using images, audios and videos? So the answer will be again MS PowerPoint. ठीक है. Next, which of the following features is present in Microsoft PowerPoint but not included in MS Word? So वही answer रहेगा transition. Slide transition is not an option present in MS Word. It is only in MS PowerPoint. Then, which of the following is not one of the PowerPoint views? सो क्या क्या दिए हैं? स्लाइड व्यू, प्रेजेंटेशन व्यू, आउटलाइन व्यू और स्लाइड शो व्यू. तो स्लाइड व्यू होता है प्रेजेंटेशन व्यू, नॉट वन ऑफ पूछा है ना, तो प्रेजेंटेशन व्यू करके नहीं होता है. ठीक है. स्लाइड शो व्यू होता है उसमें. So this will be the answer for this. PowerPoint has multiple views such as slide view, outline view, normal view, reading view, slide sorter view और slide show view. ठीक है. Next, which of the following tasks is possible in the slideshow of PowerPoint? Browsing a website, playing a YouTube video and preparing class results. तो इसका आंसर क्या रहेगा? अच्छा, कर सकते हैं ब्राउज, पता नहीं था मेरे को. So the answer is all of these. During a PowerPoint slideshow,
Users can browse website, play videos and present prepared academic content such as class results. ठीक है. Next है in a PowerPoint presentation, which of the following actions constitute animation? So these are the options given: fading of a slide, inserting a text box, inserting a graph, or specifying motion path. तो इसमें देखिए फेडिंग ऑफ अ स्लाइड इज अ फॉर्म ऑफ एनिमेशन. ठीक है. इंसर्टिंग टेक्स्ट बॉक्स नहीं होता है. इंसर्टिंग अ ग्राफ इज ऑल्सो नॉट एनिमेशन. स्पेसिफाइंग मोशन पाथ इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनिमेशन. ठीक है. So animations include visual effects such as fading and motion paths. Inserting text boxes or graphs alone does not constitute animation. Next, in Microsoft PowerPoint, Format Painter is used to paint attractive pictures on slides, change background color of slides, copy formatting. ये answer. Copy formatting from one object or text and apply to it elsewhere. ठीक है. तो Format Painter copies formatting, the font style, size, color effects from one text or object and applies it to another. It helps in maintaining a consistent formatting across the presentation. Okay, so that is all for this video. Thank you. Kindly like, share and subscribe to my channel if you found this video helpful. You can also follow my Telegram channel for any updates, and kindly give some content suggestions in your comments down below. Thank you.